हाय पावर भाई कैसे हो? मेरी आवाज़ क्यों बैठेंगी थोड़ी सी? अरे यार ये ना टर्निप वहाँ इतना मूड खराब करते कभी कभी। ये क्या है 2 MB से ज़्यादा का तुम वॉलपेपर नहीं बना सकते। मुझे अपना ही वॉलपेपर का स्क्रीनशॉट लेके उसको क्रॉप करके फिर जाके वॉलपेपर मैंने अपने ही थंबनेल का स्क्रीनशॉट लिया उसको क्रॉप किया है तब जाके मैंने थंबनेल लगाया। रिक्स की गोमी गो यार जिंदगी ऐसी झंड चाहिए यार तुम रिक्स की गोमी खाते हो झंड करने की मैंने बताया। आवाज़ बैठे थे तो चलो तो किस्मत से ये दिया। तुझे पता है ना नेक्स्ट अपडेट में क्या होने वाला है? पोर्नोग्राफी आई गेस। फाउंटेन आ रहा है इतना पता है मुझे, इससे ज़्यादा कोई मैंने नीक्स देखा नहीं। मैं एक्चुअली गेम्स की ना ज़्यादा इन्फो देखता नहीं क्योंकि वो सारे जो यूट्यूबर्स होते जाते हैं वो ना वो दे देते हैं उसकी प्रिपेयर करने के लिए तुम्हें बहुत सारी चीज़ें बता देते हैं, तो इसलिए मैं उन पर उतना फोकस नहीं करता था क्योंकि वो बता देते ना फिर हम अपने हिसाब से एक सरप्राइज़ नहीं बचता मांगे कि यार ये भी आया है ये भी आया है वो भाई इसमें ये नया चीज़ आया है। हम पहले ही सब कुछ देख चुके तो इसलिए मैं ज़्यादातर नीक्स बहुत कम देखता हूँ। देखा है भाई सामान बेचने वाला भी अभी आएगा। अरे यार रुक जा भाई। नाइट बोट ब्राइटनेस का है मुझे नहीं यार ऐसा कुछ नहीं है। Excuse me, did you happen to see where the missing scholars went? ओ भाई एट द रेट प्रभव हाउ बाबेक डॉट ब्लैकलिस्ट वार्निंग स्पैम। नहीं बीजमाई नहीं खेलना भाई, बीजमाई का आज कोई प्लान नहीं है। Let me think. When I was eating dinner the other day, I saw one of them by the side of the road, muttering away and eating mushrooms and tree roots. I shouldn't go around eating that kind of stuff. वैसे ही मन नहीं है। Did you notice anything else? Anything else? No, I think that's all I एक have सेकंड to में tell ट्राई you. करता हूँ जेंशन Sorry. लिखने पे ब्लैकलिस्ट करे क्या? मेरे को एक सेकंड क्या हो गया नाइट बोर्ड को आज? जेंशिन इम्पैक्ट मैंने तो नहीं दिया, मुझे तो नहीं कुछ कहा इसने अभी तक। पता नहीं Time to go. मुझे तो वो नहीं, मुझे तुमने क्या आंसर दिया? Have you seen them? अरे तुमने एक ही चीज़ 2-3 बार कह देगा ना। हाय जोकर भाई कैसे हो भाई, वेलकम बैक। Don't change the subject. नाइट को यार एक बात बताओ, मेरे को 3-4 बंदे देखे वॉचिंग एक क्यों दिखा रहा है? माइक को सबके साथ नहीं भाई नहीं होगा स्टडी विद मी आज नहीं होगा, दिन में होगा। सुन 2 मिनट में चैट देख के। Honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If I it need weren't for Genshin them, Impact. my house would have collapsed long ago. भाई सबको जेंशिन देखना भाई, बीच में किसी को नहीं Grandpa and देखना। the others are good people? Grandpa? Oh, hello there. It's little Isak. एक मिनट पर That भाई nice कुछ तो man who दाए looks तुमने like चाहिए। Grandpa's long lost friend, right? क्या He was कहते? actually the one who protected my house. I saw it with my own eyes.
एक He सेकंड, क्या happened कहा to be इसने? staying near my जेंशिन? house that day and was doing something with his hands on the ground. अरे It यार still नहीं, feels जोकर भाई pretty मैंने कहा था surreal now रहने that I दो think फोन में, back बस on it. खेलना Did मत। someone teach them how to do that? Well, whatever the ये case, क्या किया भाई? I'll always नो be thankful to him and whoever taught him to look out for others. I'm What pretty the heck sure भाई, that ये if क्या I किया ever went इसने mad, यार? I wouldn't be भाई able to दूसरी do आईडी से आने anything एक बार like जोकर भाई, that. ये क्या किया इसने? Gotcha. Thank you. भाई ये क्या है? ये क्या कर रहा है नाइट बोर्ड भाई? अरे नाइट बोर्ड ने जोकर उसको प्रभाव भाई को बैन कर दिया यार। ये दूसरी आईडी से आओ प्रभाव भाई, मुझे देखना है कि क्या हुआ ये। Sir, have you seen my grandpa recently? You know, the one who likes to sit and space out near the village entrance. Oh, well, if it isn't Isak. Oh, your तो हम grandpa. भाई ये क्यों? huh? मेरे समझ नहीं आया यार, नाइट बोर्ड ने क्या It's been किया a भाई? while. नाइट बोर्ड क्या कर रहा है The भाई? last time I saw him, he was spacing out by the road as usual. I went and asked him if he'd like any of the Michael, food I had prepared, despite my wife's protests. Like many people, she's really quite एक terrified. सेकंड में of- ना नाइट बोर्ड चेक करो, एक सेकंड। And speaking of my wife, she's still always complaining about how I don't make enough more. मैं नाइट बोर्ड चेक करूँ, ये नाइट बोर्ड And क्या कर रहा है explaining why भाई? she's नाइट बोर्ड always mad at me. ये क्या सोच सकते Oh, हैं भाई? thank you. Thank you for प्रभाव ने क्या taking care किया of him. It was nothing. Hey, you're looking चेक for him, यार right? भाई, एक Did he सेकंड go रुको for भाई, a चेक करता walk हूँ मैं। and वो get प्रभाव lost? भाई क्या हुआ, क्यों इसने किया? Yeah. स्पैम प्रोटेक्शन। That's no good. Well, once you found him, come by my place again and I'll cook a little something for the both of you. ऑप्शंस I've known you since you were very young. So as far as I'm concerned, you're family. Please feel 600 free to come सेकंड by तक बैन है तुम। anytime. 600 Wow, what a सेकंड nice तक। guy. Okay. Thank you, sir. ओ मैं समझ गया, शिट भाई, मुझे हटाना पड़ेगा ये, मुझे कुछ हटाने पड़ेंगे एक दो वर्ड। मैं समझ गया क्यों किया है उसने। सबमिट डिस्कॉर्ड पे आ जा, आगे आ गए, एक सेकेंड। Don't say anything for now. Isak, stay here. Let's head over there. Stay quiet as you move. ऐसा मैंने कैसे कर दिया? ओके, एक सेकंड में उसे ठीक करूँ। This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. ओके, एक सेकंड में डिस्कॉर्ड ज्वाइन करूँगा। डिस्कॉर्ड में किस में आ गए तुम? कहाँ टच करो में भी यार डिस्कॉर्ड। तुम उसमें हो क्या? किसी में तो नहीं हो यार।
Time to go. Listen, see if you can make out what they're saying. Have you heard? The mighty King Deshret, the sovereign of our faith, will soon return to this world. Yes, of course I have. King Deshret is the one and only true ruler of this land. I've never believed in any other gods. Still, you say he's coming back, but it sure doesn't feel like life's about to change around here anytime soon. What's your proof? Haven't you noticed? The village has been getting more deranged scholars than ever. Delavar was saying that many people also went insane just before the fall of King Deshret's civilization in ancient times. We don't quite know why, but it seems like there's some sort of connection between insanity and King Deshret. Isn't it a sign of King Deshret's power that all the mad scholars have disappeared? If you ask me, they must have been chosen as the final sacrifice for King Deshret's resurrection. Huh. Now that you say it, that does make some sense. Does this mean our lives are finally going to take a turn for the better? Exactly. Those city folks will get what's coming to them. Now, repeat everything you've just said from the very beginning. Huh? Who are you? Where did you come from? My patience is running thin. You heard what I asked. Yeah, bro, this guy's something else. Just look at his eyes. One wrong move, and he's gonna flay us alive. Let's not get on his bad side, okay? I am no match for this guy. Oh, okay, good sir. What is it you would like to know? Tell me about King Deshret's resurrection. Well, I only know a few things from hearsay. I went for a drink the other day and heard others talking about a rumor that the madmen will disappear and that King Deshret will return to this land. I'm not making this up, I swear! Hey, go on. Keep talking. It's true. It's all true, sir. We desert folk have had more than enough of those people at the academia. They keep sending us all their mad scholars and won't let us have a good life. Would you want to live like this if you were in our place? The radicals were even more thrilled than me when they heard the news. We're all praying for King Deshret's speedy return. Delavar also said that once King Deshret returns to our side, it's only a matter of time before we conquer the land on the other side of the wall. They're all willing to serve under King Deshret and fight for a share of the glory. Is that so? Seems like he still wants to know more. Keep talking. Got it. At first, I told myself it was just the drink talking, but then all the mad scholars vanished without a trace, just as the rumors said. Please don't beat me up just for mentioning these rumors. If I'm guilty, then everyone else around here is also guilty. I'm just saying what the others said. The people here really like King Deshret, but dislike the Dendro Archon. Where is this radical person you talked about? I haven't run into him over the past few days, so he probably hasn't been around the village. What about you, man? Have you seen him at all? No, not at all. We wouldn't dare lie to you. He's really not here right now. Sounds like you're not too close with the radicals. No, of course not. All we know are their names. I have many ways to stop you from talking, and many others to stop you from sending warning messages. So you'd best just stay home and hope I don't hear of you trying to contact anybody.
Don't do anything until I've gotten to the bottom of this. Try something foolish, and even Candace won't be able to protect you. Yes, yes, got it. We'll do just as you say. That scared Paimon half to death. Sino is pretty terrifying. He didn't try to reassure us at all. It's like he's used to hearing that. Oh, Paimon bets lots of people have told him that before. I heard that. Sorry. It's part of being a Matra. The rumor we heard just now seems like a strong lead, but we need to check a few more places. Very well. Isaac! I'm here. Where's your grandpa's house? Well, I can take you there. Just follow me. Grandpa? Oh, he likes to be alone. Sometimes he stares at the sky in a daze, and other times he just pokes at the ground with his fingers. Every now and then, he yells out at the top of his lungs, so a lot of people are really scared of him. But he's a good person, really. I know he is. I swear, he's just like my real grandpa. This is where Grandpa usually stays. There sure isn't much here. No. Incense? Please don't say it's the same one as before. But are you okay? Are you getting dizzy or need to lie down? There's a scent that you can sense, but I can't. A
certain traveler here once passed out from that smell. Thankfully, Tainari saved the day. And then he gave us a long lecture to explain all about how it worked. So, you know Tainari? Huh? You know him too? Are you two friends? Yes. Now that I concentrate, I can also make out the scent of incense. Wait, surely Tainari didn't lecture you too? No. No need. Did you first encounter this scent at Tainari's house? In the forest. From a...
Time to go. What are you looking for, Sino? Here it is. Take a look right here. Paimon doesn't see anything. Although the traces have been completely buried in the sand, there are footprints here. From the size and shape, they belong to an adult male. This pattern is a common one from this area. Local shoes. This was probably someone from the village. The scent is quite faint, but still extant. The footprints head in that direction. But who would come looking for Grandpa? He doesn't have any friends. We'd have to ask whoever lured him away with the incense. Huh? So you can lure someone away with just a scent? Hey! What's wrong with liking good food? Everyone's got something they love in life. Exactly. Most scholars are fond of incense, since the smell supposedly helps them clear their minds and discover new knowledge. Even deep within the clutches of madness, they still yearn for their knowledge-seeking days, and will follow the scent whenever it presents itself. No, Grandpa. So, someone's taking advantage of their weakness? Huh. Still, why would anyone want to abduct all the scholars? Are the rumors really true? Could the disappearance of all the mad scholars have something to do with the radicals? It's highly likely. Please, you have to save my Grandpa. Grandpa's never done anything wrong. Please help him. Sounds like we'd better help get him back. Don't you worry, Isak. We won't let whoever took him get away with it. Let's head to Aru Village and inform Candace and the others about what we learned here. After that, we'll set off to find the scholars. This scenery is wonderful. Surely enough to convince anyone to become a wanderer. Time to go. Right. The darker fabric definitely looks a lot better. That'd be my choice, too. We're back, Candace! We've got a lot to tell you. Ah, welcome back. Sounds like everyone's friends already. Oh, Dia's here too! You bet. So, everything goes smoothly? Reasonably. Alhaitham didn't go with you? We haven't seen him at all. Huh. I saw him around the village entrance earlier and figured he was investigating with you. I guess he must have gone off on his own.
Did you find out anything useful? I see. So someone used a kind of incense to lead the exiled scholars away from the village. The resurrection of King Deshret? First I've heard of it. Far as I know, the kind of incense you just mentioned is only popular beyond the wall. Scholars are fond of it, but as you can see, there aren't many scholars still studying around these parts. No seller would be able to make a profit. Not to mention making incense is a labor-intensive process. You won't see anybody in the desert with the patience to make or sell something that requires that kind of effort. It seems someone from beyond the wall must have been supporting this. Makes sense. So what should we do then? Do we go back to the academia and search for leads there? If it was any other day, that would be your next logical step. But today, you've got me on your team, so you get an extra tip. Didn't you say that the villager got his news from the tavern? Well, I also like to drink at the tavern, so I know a thing or two about these radicals he mentioned. If Paimon remembers correctly, the leader of the radicals is some guy called Delavar. Ah, yeah. Delavar, the scar-riddled bandit, Engur, the wide-eyed butcher, and Jabari, the duck-tailed bearded crook. The whole lot of them are known around these parts. These guys have one thing in common, and that's being broke. The rougher life gets, the more they want to believe in King Deshret. Way they see it, King Deshret's resurrection is their only chance at overthrowing the academia. Throwing all of Sumeru into chaos is the only way to change the way of life here in the desert. Anyway, that's my guess why they've chosen to become radicals. Tia! You're amazing! You really know this place inside and out! No merc can afford to slack off on gathering intelligence. Every mora I've spent in the tavern has been a valuable investment. Let's head out. Now hold on, you're staying right here, Sino. Why? Aru Village is not a big place. Outsiders stand out here like a sore thumb. I'd bet word about you has already gotten out. The desert is unforgiving, so the way of life here is also a lot tougher than on the outside of the wall. You survive on making connections out here. Compared to you, mercs like me are just third-rate amateurs. I've got no actual fighting skills to speak of, but that also makes it a whole lot easier for me to gain the locals' trust. I need to go around and ask some questions, but it'll be difficult if you're with me. Fine. Good, then we've got a plan. The Traveler and Paimon will go to Caravan Rebot with me, and we'll try our best to figure out where the mad scholars have been taken. Sino, you'll have to stay in the village and continue investigating on your own. Alright, sounds like a plan! Sounds like you're starting to get familiar with the area. Paimon's amazed every time we see the wall of Samiel. I know what you mean. I had the same question every time I walked this way when I was a kid. Also, why is this high wall here? And can a wall really block sandstorms? It was only after I grew up that I realized the wall of Samiel isn't just there to keep... Sumeru is run by wise and mighty sages. To them, us desert dwellers are nothing but tools that can be used and discarded at their whim. We're cheap labor,
Even if a child from the desert got the chance to obtain an Akasha terminal, almost all their requests for knowledge would be denied. Geniuses like Sataria are 1 in a million. The other children never get a single chance to try and rewrite their fate, even though the academia knows very well that we're humans, just as they are. That's terrible. I would tear down this wall with my own hands if I could. Hey, Dia. You're not thinking about doing anything scary, are you? No, not at all. This place just gets me thinking, that's all. Besides, we're here to procure information, aren't we? Yep, we gotta catch those... Shh. Caravan Rebot is crawling with people, so be careful what you say. We don't want anyone to find out what we're here for. Our mission started the moment we arrived here. Let's go check out the tavern. Maybe we'll find someone I know. The wind knows me. Travelers and visitors, don't miss out. Just our luck. None of them are here today. You mean, you don't see anyone you know? Dia, is that you? What a coincidence. You here for a drink too? Zaki. Finally, a friendly face. Oh, and who do you have with you here? Guests from another land? Hello, hello. I'm Zaki. Dia's, how would you put it? Drinking buddy? We've had drinks together a few times. You could say we go back a ways. Anyway, as far as my friends here, they aren't too shabby, are they? You rarely see any Outlanders so friendly and respectful nowadays. Absolutely. Much better than those people on the other side of the wall. So, Dia, are you looking for someone? Yeah. Have you seen Enger, Delavar, or Jabari recently? Of course I have. Matter of fact, we were all here drinking together just a few days ago. I've got a spice trading deal from another nation. I thought maybe Delavar and his friends might be interested. Know where I could find him? Ah, how thoughtful of you. Then I assume you also know that Delavar's been having a hard time making ends meet these days, so you came here to help him out? Hey, keep it down. Let's just say I prefer to keep this deal a secret. Y'all at Caravan Rebot are like family. If there's more to be made, why not do it together? Besides, Delavar and his friends have muscle. They'd be a good fit for escorting the goods. Yes, how considerate of you. Delavar's my friend too, so of course I can take you to him. Come with me. Time to go. Are we there yet? Yep, this is the place. This place is practically deserted. What are they doing in a place like this?
Why don't you take a guess? Go on. A wild stab in the dark. Oh no! It's an ambush! What's this all about, Zaki? Come on, Dia. You really think we didn't hear about what you said back in Aru Village? The boys have kept a close eye on you from the moment you set foot there. Not only do I know that you're looking for Delavar, I also know that you've teamed up with people from the Academia to look for the missing scholars. So, you've been watching us from the very beginning? Uh-oh. Paimon knew leaving Sino behind was a mistake! And you left the strongest one in the village, didn't you? Who do you think you are? You really thought we'd fall for your little business deal nonsense? So you and Delavar have been partners all along. Dia, I guess it's only natural for a traveling mercenary like you to be out of the loop. Those of us who hang around but you got one thing right. We're all looking forward to an uprising in Sumeru. There's nothing more we'd like to see than the desert folk overthrowing the Academia. If that's the case, then I'm sure Delavar wouldn't miss a second of it. I'll be honest with you, if it weren't for what you said in the village, your little monologue about the Wall of Samiel would have convinced me that you're one of us. Delavar. And Enger, you're here too, huh? Long time no see, Miss Mercenary. You should have known the traitors are what us followers of King Deshret despise the most. Dia, I thought that you, a fellow desert dweller, would understand why King Deshret is greater than the Dendro Archon. Yeah, gee, what a missed opportunity. Adopting radical views and kidnapping innocent scholars, all because of some baseless rumors. Anything else I'm missing out on? See? There you have it. Mercenaries are just a bunch of faithless scum with only one thing on their minds. Mora. Pathetic. You're all like a pack of street rats. You're not wrong. Mercenaries are driven by Mora, and my faith lies with whoever's paying me. As long as there's a profit to be made, anyone can become my friend. Enough talking! Get him! Just as I expected. Let's teach him a lesson, traveler. Following orders. New punching bag. Boba, get them! Into the wind. Yeah! One with nature. Impossible! How could you? So, what do you think about your meticulous network now, Zaki? How did you say it? It's only natural for a traveling mercenary like me to be out of the loop. I'm guessing your informant told you that I'm just an incompetent merc with no real fighting skills, correct? I mean, that is what I said after all. And of course you would believe everything he reported. The only thing you know about me is that I'm a mercenary, but you've never seen me in action. Even though you heard we went to handle monsters together, you believed that Candace was the only one doing all the real fighting. That so-called Flame Mane is just a fraud. She admitted it herself. She just uses her connections to gain the trust of others. That's what you thought, right? Ugh. You lied in the village because you figured that we'd have people watching you. And you were stupid enough to fall for it. I figured as much the first time we drank together. You all thought you were so smart. Pathetic. Okay, that should be all. Whoa! So you've been planning this since we were in Aru Village? No task can be done without preparation. I just happened to notice a couple suspicious-looking people while you were out investigating. Oh, but instead of catching the
them right away, you let them report back. Those two who were snooping around were just a couple small fries. If we want to get the real catch, we have to be patient and give it some time. Oh, you mean the funny name she mentioned back in Uncle Ampu's house? The wide-eyed butcher, scar-riddled bandit, Paimon can't remember. That's just a bunch of drunk talk. Edgar and Delavar like to talk themselves up when they're drinking. Edgar, the wide-eyed butcher, and Delavar, alcohol has a way of making people share what they really think. Oh, so Edgar and Delavar wait. always ramble कहाँ in the जा रहे हो? tavern about how King Deshret is a superior deity. What about Zaki? He's just a numbskull who fell right into our trap. Zaki was probably the best hidden of them all. My initial plan was to find Delavar first, and then try to track him down. That's what you wanted to ask when we were at Uncle Anpu's house, right? Jabari is one of the भाई villagers wait you talked to. find a new friend. Find a new friend for what? भाई तुम हो तो सही जुके भाई. तुम हो कहाँ जाओ तुम? So he's a radical too? No, he isn't. I just needed to tack on a random villager name to make the eavesdropper think that I was making some wild guesses based on my अरे जोकर भाई impressions. 300 प्रीमोस का रिडीम कोड है. तुमने रिडीम किया क्या? वो जोकर भाई 300 प्रीमोस का रिडीम कोड रिडीम किया तुमने? Ah, you're too kind. It was straight from the usual playbook, if I'm honest. So, that thing you were saying before, is it really true? About what? About how mercenaries only care about Mora, and that anyone's a friend as long as there's a profit. Does that bother you? What makes you so sure? Dia, do you dislike the Dendro Archon like the other desert folk? You two are pretty sharp. No, I don't have anything against the Dendro Archon. I've heard a lot of nice things about the Lesser Lord from Dunyarzad. I can understand her devotion and gratitude. Dunyarzad's just an ordinary person. There's no way a god would be so involved in the lives of everyday people, unless they were truly compassionate. I've begun to realize that the sages are behind everything that's happened recently. The radicals' blind belief in King Deshret, making the Dendro Archon out to be an enemy. It's all the academia's trickery. But I see through it all. And unlike them, I can never be hostile towards anyone who's never done anything wrong. Dia. Anyway, looks like we're done with business here. Traveler, lend me a hand. Let's tie him up and bring him to the village. This should be all of them. I'll let you take it from here. All right. I'll be in touch. Until then, please stand by. Candace, do you need any help? Candace will be okay on her own. I trust her, so you can too. She's been guarding Aru village for quite some time now. If anyone is qualified to question the offenders, it's her. While I'm questioning them, why don't you pass some time by exploring the area? I'll meet you back here tomorrow morning, Traveler. As for these idiots, let's just hope they live to see another day. अरे स्टॉर्म टेरर से कि स्टॉर्म बैरियर से? माइक को
चलो प्रभु भाई कहाँ से गया तुमने? स्टॉर्म टेरर से? मैं चेक करता हूँ। स्टॉर्म टेरर किस साइड जाना? इस साइड जाना मुझे बताना। इस साइड, इस साइड। There are leaves around, and I know just the tune to accompany them, if you wish to hear it. एक सेकंड, इसकी तो बात नहीं कर रहे तुम? कहाँ है? चेंज भाई। Everything's ready. Let's go. इसकी तो बात नहीं कर रही। ये जो ये है जहाँ मैं पॉइंट है उसके ऊपर, ये उसकी बात करो क्या? ड्रैगन चैलेंज तो अभी नहीं करा मैं। ये इसकी बात करूँ क्या? ये जो ये दिख रहा है, ये क्या सिनेस्ट्रिया? अंश पटेल मेरी भी उस एरिया मेन है। सेम मेरा भी उस एरिया में है। ये क्या वो जेड चेम्बर तो कहाँ से निश्चय है यार? एक सेकंड, मैं रेड बैरियर कहाँ पे? रेड बैरियर हमारे यहाँ पे है। इधर चलते हैं। पहले ना इससे अपनी एचपी बढ़ाने थे। तो एक सेकंड चेक करता हूँ मैं। तो हमें उस पे तो दिखा नहीं जो हम फोर्स नेम पे जब गए थे। फोर्स नेम पे भी दिखना चाहिए था फिर तो। We can do this.
जेड चैम्बर ड्रैगन स्पाइन की हाईएस्ट पीक से भी दिखता है। ओ भाई तब तो वहीं जाएंगे हम। संगश्टे आसमान में उड़ता उड़ता दिखता है क्या कहीं पे? अरे ये क्या है ये? यहाँ से तो मैं होके आ गई, मिशन कर चुका हूँ मैं। मैं अभी कर रहा हूँ ये मिशन, आइकन क्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, बट अभी टाइम नहीं हुआ है और मैं टाइम स्किप नहीं कर रहा क्योंकि मैं कुछ सर्च कर रहा हूँ अभी, कुछ रिसर्च पर्पस। अब मुझे तो ना दिख रहा है, तुम क्यों दिख रहा है? इसके ऊपर चढ़ना पड़ेगा मेरे हिसाब से। हाँ भाई नाइक कर दो यार, देखो ना नाइक मांग मांग के ना जिंदगी घिस गई है। यहाँ से चढ़ जाएंगे मेरे हिसाब से। वो ये जंप वहाँ पे ना पैराशूट ऑन नहीं होता अपना, वो आई मीन वो ग्लाइडर। AR-56 पे आके छोड़ दे गेम। AR-56 पे आके छोड़ दी गेम तुमने? भाई मैं तो भाई मुझे अभी 1 महीना हुआ है मुश्किल से, तो मैं तो अभी खेलूँगा भाई। मैं कम से कम इसे 5-6 महीने तो खेलने वाला हूँ इस गेम को, उसके बाद सोचूंगा छोड़ने का। Time to go. अच्छा है स्टोरी तो अच्छा है भाई इस गेम का। भाई चैम्बर ऐसा बनाओ कि दूर दूर से दिखे। जेड चैम्बर भाई बहुत दूर से दिखता है। मदद तो हमने भी किया था उसकी। भाई गाइडन हर टाइप में बेस्ट है। गाइडन में बेस्ट नहीं, गाइडन सिम पहनेंगे तो अरे वो तो है। जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है फाउंटेन, उसमें शायद इस साइड का एरिया अनलॉक होने वाला है थोड़ा लिमिटेड टाइम मैप में जो आ रहा है। आप प्रभाव भाई कहाँ की बात कर रहे हो? और कोई गिनेच यूज़ करके हम जा नहीं सकते क्या इसके अंदर? अभी तो कोई भी कुछ नहीं बनाया इन्होंने बिल्डिंग। इन्होंने अभी तक तो कुछ नहीं बनाया इस साइड। बनाया क्या है पूरा स्पेस जितना मुझे दिखा अभी तो। भाई फाउंटेन 4 अपडेट में 100 GB पहुँचगा। अगला 3.8 है।
अरे तुम कहते ना छोटा सा सिंगेस्टर दिखता है, वो पूछो कहाँ है। अपडेट की बात नहीं कर रहा मैं, तुम कहते छोटा सा सिंगेस्टर दिख रहा है अपडेट के हिसाब से, कुछ कहाँ दिखा? मुझे तो नहीं दिखा कहीं पे। अच्छा ये क्या है? ये बिंगू बिंगू था वहाँ पे सामने। अच्छा वो मून है क्या? अच्छा मून है वो। मैं वही सोचूं कि वहाँ तो कुछ है भी नहीं, रेंडर ही नहीं हो कुछ। अब तुझे नहीं दिखा पा रहा हूँ, तुझे नहीं दिखा पा रहा हूँ, मैं क्या बोलूँ। मेरे हिसाब से ना तुमने जिसकी भी वीडियो देखा होगा ना, वो उसने वो एडिट किया होगा उसमें। यार पूरा तो तुमने देखा था क्या प्रभव भाई? तुमने खुद देखा था क्या अपने वो फोर्स नहीं है सामने? ओ ये है क्या? ये है क्या? एक सेकंड, अरे ये है क्या सिंगेस्टिया सामने? This scenery is wonderful. Surely enough to convince her. I'll ensure your safety. ओ अरे कहाँ आइएगा? यही तो है, ये देखो ये। क्योंकि इस एक सेकंड, मेरा जिस साइड फोकस है ना, मेरी तुम फेस देखोगे तो मैं जिस साइड फेस है उस साइड कोई और वो स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर पाते हैं। यही तो है। और भाई टाइम दो। उधर जा ही नहीं सकते, वही तो। सिंगेस्टे मूव कर गया, मैं भी तो वही चेक कर रहा हूँ। हट जा पाइमोन। हैं? अरे यार बारिश हो गई। यार वेस्ट हो गया पूरा। भाई सिंगेस्टे मूव तो कर रहा है भाई। यार बारिश करवा दी पाइमोन। उसका क्वेस्ट आ रहा है। हाँ शायद में भी आए, शायद उसमें फाउंटेन अपडेट में कुछ होगा। हट भाई हट 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 हट। ओ डिसअपियर हो गई, धीरे धीरे। ये देखो डिसअपियर नहीं, वो हो गया थोड़ा सा बंगालिश। वो मैंने सिंगेस्टिया नाम पहले भी कहीं सुना हुआ है, किसी एनिमे या किसी। एक सेकंड, सिंगेस्टिया नाम उसमें भी है ना, GO2 में भी है शायद। नहीं सिंगेस्टिया किसमें है? हमने सिंगेस्टिया किसी और में भी सुना हुआ, किसी एनिमे में। वो मूव कर रहा है शायद, क्योंकि मैंने इस साइड का सुना था। ये नहीं सही तो है मेरे हिसाब से। हाँ फन फैक्ट, जेंशिन केवल ट्रेवलर के साथ ख़त्म नहीं होगा। दिस ट्रेवलर चैप्टर 1, दिस इज टेवार्ड चैप्टर 1। हो भाई हो गया। वीविंग एंटर इन होयो वॉइस, ये तो है, जाना तो पड़ेगा होयो वॉइस में। अरे मैं एरो क्यूब वो करो तो अपने क्वेस्ट गए थे वापस।
होंकाई स्टार में भी टैबना के विंग्स दिखे थे। बंद ना हो जाए बस चाइनीज भाई, याद मत दूंगा भाई। Wish me luck. कि मेरे को तो भी एक हफ्ता, हाँ क्या कहते हो, 5-6 महीने भी नहीं हुए गेम खेलते हुए। ये मेरा कितना 37 डे है आज। मुझे कम से कम 2-3 महीने तो एंजॉय करने दो यार। मैं फेस किस साइड है भाई, मानना पड़ेगा, दिख तो है। तुम्हारे 3 साल हो गए भाई, कैसे क्या कर रहे थे 3 साल से? तो भाई से तो दिख गया मुझे। अब हम आराम से अब ट्रैवलर चैन से मर सकता है। आईफोन 6 में चालू किया था भाई, स्टोरेज की दिक्कत नहीं आती क्या आईफोन 6 में? इसमें Hey, Tia. Right on time. We'll know any moment now. Hyman's been wondering. You seem to know Candace pretty well. Have you been friends for a long time? We've known each other for some time now. She's a pretty interesting person. Even though she's an extremely strong warrior, she never misuses her powers against others. Oh, Hyman knows what you mean. Like a lot of martial artists say, never take a fight outside the ring. Yep, I guess you can put it that way. It takes strong convictions to be as dedicated as she is, and shoulder that kind of responsibility. Good night. Us mercs, on the other hand, we pretty much live from one day to the next. Well, Paimon thinks you're great too. Really? Thanks for that. Oh, Sino's here. He's pretty early too. Yes. I was here yesterday to help out a little. To help out? By doing what? Sharing some interrogation techniques. Oh! एक सेकंड मैंने क्या कहा है? You mean you taught Candace some more persuasive methods? अरे मैं Right. कागुया की बात कर रहा हूँ। कागुया होता है, ये कागुया होता है, मुझे नाम जानना है। Come on. नारुतो की कागुया, जिसका तुमने सेंटर थर्ड आई अपने डीपी में यूज किया हुआ है। आई ऑफ द मून। भाई कागुया से कोई, मतलब कागुया को आज तक ना एक ही पर्सन सोमो बीट कर पाया है, वो है सेज ऑफ 6 पाथ का फादर ओतोस्की। Oh, you look furious. Do I? What gave it away? Oh, there's no mask that can hide true bloodlust. Cover up your eyes, and it'll still show itself in the corners of your mouth. Perhaps I need to work on my composure. Still, it's perfectly understandable why I'm angry. I'm sure everyone present would agree. Yes, please, don't beat us anymore. You're gonna die. Well, looks like Sino taught her well. You fear death yourselves, yet you do not hesitate to place the lives of others at risk. The absurdity is mind-boggling. The ones you call mad scholars are known to us as the Village Keepers. They are vital members of our community, and some even count them as family. You come here to my village, and you treat my people as nothing more than stepping stones towards your goal. Tell me, what would you do to you in my position? Mercy! Please, have mercy! You've made your bed. We may all be desert dwellers, but there is one thing that I understand better than you. The resurrection of King Deshret will only result in war. And war serves no one.
The people of our village care little about which god is in power. Life may be tough and tiring, but we wish to preserve our way of life. A war would only cause us to lose all that we have. And that is not a responsibility that you can afford to shoulder. We understand. We're sorry. I'll tell you everything I know, please. I'm listening. You might not believe this, but it wasn't us who came up with this idea. Someone was spreading rumors in the tavern. That's how we ended up hearing about King Deshret's resurrection. Some mystery man told us that mad scholars will make the perfect sacrifice to usher in King Deshret's resurrection. They give their lives, and we can get anything we wish for. They're called village keepers. Slip up again, and you'll regret it. Yes, sorry. It was all that mystery man's doing. He told us to spread the word about King Deshret's resurrection, and talked us into helping him. In return, he said he'll help facilitate the resurrection I find process. but one friend I find. What the hell? I find friend but no one I find. मतलब तुम दोस्त ढूंढ रहे थे पर तुम्हें कोई मिला नहीं. अरे मैं हूँ ना. I'm not sure. हम है ना जो भाई मैं प्रभव भाई है तू. Huh? One what? Strike. No. You get a total of 3. Then, you die by my hand. Wait, I'm telling the truth. We don't know Why, anything. why? It was all him. 2. He got us to lure them out of their houses in the night with some kind of incense. We take them to a junction outside the village. Then the mystery guy takes them from there. अगर नहीं भाई जो भाई तुम साथ हम हैं तुम्हारे साथ. You gotta believe me, please. I'm telling the truth, I swear. Just ask them if you don't believe me. That was indeed the truth. Traveler, go on. You have to believe me. If I knew that, I would have told you his name right away. I'm not risking another beating to keep his secrets. No way. That guy, he wears a cloak, and he's always careful to cover his face. He calls himself King Deshret's envoy. I believe I may know what's going on. Uncle Anpu? What do you mean? Oh भाई we are boy. Yeah shit भाई. अरे जो भाई क्या हुआ है? वो है? किसी को फेंका है किसी ने? Smooth. Okay, speak. If my suspicions are correct, this mystery man they speak of could be from the academia. Some time ago, people from the academia attempted to take the village keepers away. I refused, insisting that they are part of our community. It strikes me now that this secretive character shares the same goal they had. Which means it's highly likely that the academia was purposely spreading a false rumor to trick the radicals into delivering the village keepers right into their hands. They were the ones who brought them here to begin with. Now they're trying to take them back? We aren't gonna let that happen. Not the academia again. Just as I thought. But what could they want with the village keepers? We are here. I am here with you भाई. Don't worry. People are nothing but tools in the eyes of the academia. A change in their plans likely means they found another way to exploit the scholars. Regardless, our top priority now is locating the village keepers. You're right. Isaka's still waiting for news on his grandpa. Reject humanity, become Time to go. Naga. Let's leave the village and try to track them down. Reject humanity, Yes. become Aaron Eagle. Pack up and get ready to leave. Shinzo You got it. Sasageo. Candace, I'll let you deal with the You radicals. name Leave everything 300 outside the primos. village to us. मैंने बोलूँगा तो Alright. तुम्हें रिडीम कोड बता देता हूँ भाई तुम भी Here, once everyone's ready. तुम भी कहेंगे भाई हेलो भाई कैसे हो भाई तुम्हारा नाम बड़ा अजीब है मैं पढ़ नहीं पा रहा प्रियंका बुद्ध आई गेस बताओ
प्रभव भाई वो बताओ तो, रिडीम कोड बता दो तीनों, चैट में बता दो। हाँ चैट में नहीं, डिस्कॉर्ड पे भेज देंगे तुम्हें। आई डोंट हैव गेम भाई, तो फिर रिडीम कोड का क्या करोगे तुम? What scheme is the academia brewing now? तो हमें बाहर जाना है, मैं भेजता, मैंने भेजा है भाई, डिस्कॉर्ड पे भेजा हुआ, तुम देख सकते हो जो कि भाई, ये तुम ना जेंशिन में भेज देखो ताकि हम सबको ना मिल जाए, हम हैंड टू हैंड रिडीम कर सके। माइक कर दो, माइक। यो मैंने भेजा है। सेमेस्टर तो दिख गई। Let's get some food in us and then we'll... Whoa! Where did you come from? Well, as you can see, I am merely sitting here and reviewing what we have deduced thus far. You were gone for ages! And now you're suddenly sitting here musing to yourself? हाँ मैं ये सोचो प्रभव भाई कि जो नेक्स्ट अपडेट होगा, क्या बहुत ज़्यादा गंदा अपडेट है भाई। तीन 5 स्टार ऐसे आ गए जो मुझे तीनों ही चाहिए, जो मैं एक टाइम में कोकमी को इग्नोर कर सकता हूँ, बट ट्रैवलर कैसे इग्नोर कर रहे हो? हाय एनिमे गेमर भाई, कैसे हो? You never think things through before asking questions. I'm giving you some time to make up for that. Paimon's so mad! Paimon's gonna give you an ugly nickname! पाइमोन इतनी अजीब लगती है भाई कभी कभी। Never mind. Paimon's got nothing. There's just nothing super obvious to pick with this guy. Makes it so hard. मुझे तो सारे पर Well, सारे you've heard चाहिए वो भी nothing to C6। suggest I left this whole time. So clearly, I stayed in the village to investigate. Anyway, अरे प्रभव भाई तुम तो मुझे काजुआ दे रहे थे, मुझे अभी याद आया, C6 से याद आया। the truth of this matter, yes? Yep. We're not gonna find out anything more by staying here, so we thought that we might as well take the search elsewhere. कहते तुम्हारा काजुआ निकलेगा तो तुम मुझे वो कर दोगे, दे दोगे, मुझे दे दोगे काजुआ। अबे भाई बढ़ जा आगे हैं। Enough with the silent treatment. No. I'm just surprised that you decided to team up with him. All Hatham, you haven't helped us out at all You ever since next we band में arrived निकला at ही our नहीं village. भाई। मुझे भाई इस Bold of you to जोकर को कोई question our बताया नहीं कि choices. नेक्स्ट बैनर के बाद मतलब 0.4 में क्या आ रहा है भाई? 0.4 में आ रहा है ट्रैवलर वॉन्डरर, मैं ट्रैवलर वॉन्डरर आ रहा है, और एक और कैरेक्टर आ रहा है 5 स्टार जो कि जोकर भाई प्रभव भाई बताएंगे तुम्हें। 3.8 में नेक्स्ट बैनर में। ओ भाई ये तो बहुत जल्दी है, मैं तो 4 सोचा था कि मैं थोड़ा प्रीमो से टिके करूँगा। वॉन्डर एंड एंगो रिटर्न भाई, कोकोमी भी है, वॉन्डर एंगो कोकोमी, ये तीनों चाहिए भाई मुझे। To be honest, we aren't really a Kenny team, भी so I भाई have no चारों obligation to चाहिए inform you भाई। of my whereabouts. Not to mention that देखो going भाई separate ways कैसा allowed me महसूस to हो रहा है find some तुम्हें? important information that you all had missed. ये मैं अपनी पिटी चेक हो गया, मैं पिटी क्या है? Right here in the village? Correct. I just want young. I'm going to take Going you to buy something. होयो बस। अरे मुझे सारे 5 स्टार चाहिए भाई, मुझे ना Before अनलिमिटेड that, प्रीमोस दे देना। You need to understand where she's coming from. 10 million प्रीमोस। How do you think the residents मुझे of पार्टनर our प्रोग्राम village में ऐड feel कर देना about what इसके we're होयो doing? बस के। In other words, do you truly believe every single word the villagers tell us? You mean some of them lied to us? Hiding the truth does not necessarily equate to lying. Again, these people have their reasons. Remember what Candace said? Most people in Aru village don't necessarily care which deity is in charge of Sumeru.
That's because I whether need- King Deshret or the Dendro Archon has power is of little significance to them. By contrast, the perils of their daily lives are ever-present concerns. They won't simply share everything they know with you without good reason. That's why you believed there was no further information to be found in this village. मुझे इतने प्रेमोस चाहिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी तुझे। और मेरी ना स्पेशल मैं बताऊँ, एक पैनल सिर्फ स्पेशली मेरे लिए निकालना जिसमें सारे पास्ट के 5 स्टार हो, सारे पास्ट के 5 स्टार, उसमें ना 4 स्टार एक भी ना हो, सारे 5 स्टार हो। कहेंगे चैट पर ओके, कोई टेंशन नहीं रहेगी फिर तुझे। हाँ, तेरे को बैन कर दूंगा ना, रहेगा ना, रहेगा बात ना बजेगी बांसुरी। Don't change the subject. भाई मैं तो मोहयो पर It's quite obvious that she's intimidated by Sino's authority and strength. Right. You were asking about the mad scholars. She corrected herself mid-sentence because she's aware that there are King Deshret fanatics in the village. If she sounds too friendly towards the village keepers, she could easily make herself the radicals' next target. I think it's been a few days since I last saw them. I usually go to bed pretty early, so तो क्या वो I'm फिर हुआ not क्यों नहीं familiar डालूंगा? with what goes on at night. Remember? She made a point of denying her involvement in anything that occurs at night. But honestly, I feel quite sympathetic towards them. Even though they act a little strange, they've helped me in the past. If it weren't for them, my house would have collapsed long ago. After speaking to the village chief, it became clear that the village keepers had protected Aru village at night. In other words, the young miss was very much awake मैं during यहाँ पे आ that जाऊँ भाई, time. वाईफाई से करने ना डालूंगा। Why would she lie? By getting involved with an outsider, she risks drawing unwanted attention to herself. As for why she might be so wary about all this, maybe you should ask her. I'll pass on this one. You said that she is afraid of me. भाई यूज 5G में भी it's डाटा best if I तो stay लगे out ना, of डाटा तो खर्च हो गई। We're on it. मैंने इस वजह से मना किया था, तुमको याद है ना जो कि भाई मैंने मना किया था कि डिलीट मत करना, बस यूज करना कम कर दो। एग्जिटिंग 261 का रिचार्ज हो भाई। नॉक नॉक। Miss Shawnee, as we discussed earlier, I've brought someone with me. Mr. Alhaitham, I'm aware of where you stand, but how First can I man make sure very- that your friends think the same as you? Huh? What do you mean? We need to clarify our stance or something? Go ahead and talk to her. You'll get the answers you want. Go on. Earn her trust. Is it really that simple? May I call you Traveler? Hi, Traveler. I want to ask you something. Do you think the resurrection of King Deshret can truly change Sumeru for the better? Why is that? That's very similar to what Miss Candace says. I know you two are friends. That's why I'm willing to talk to you, even though I do have some reservations. Before, I wouldn't even have the courage to ask something like this. Traveler, do you believe our lives will get better? Yeah! We came here from another nation, so it isn't wrong of you to be weary. And we aren't really residents of ट्राई any को one भाई, nation. जो कि भाई अपडेट आ रहा है। But even so, we've met lots of people from different places, and we've always fought for what we believed in. We have friends in Sumeru, and we want to help them. That's why we decided to stay here for a while. 25 GB का रिचार्ज करना है। I don't know कितने होता है, पर होता है।
Sorry, bro. Sorry, bro. I want to trust you. My apologies for posing my questions like that. To be honest, I didn't expect you to come back for more information. Oh, Heathen told us you have your reasons. It's okay. The fact is that only one side of my family is desert folk. I don't really fit in anywhere, and some believe in the Dendro Archon, while others believe in King Deshret. I don't belong to either side, and neither side would want me. Speaking of which, the radicals mentioned that they despise traitors. Do they just think that anyone who's different from them is a traitor? Yeah. Some people can be so narrow-minded when it comes to bloodline and beliefs. It makes no difference what I say or how I behave. I'll always be suspected of having ulterior motives. Slowly, I just stopped talking to people. I pretended not to hear or see anything. All I want is to live my life in peace. And then it happened. The village keepers who had helped me disappeared with no explanation, and I didn't dare breathe a word about it to anyone. Until now. You can tell them. I'm sure he'll keep your secret. मैं आज YouTube पे रिसर्च करूँगा, देखूँगा कौन बेस्ट है, उसके हिसाब से मैं पुंग करूँगा. I actually have a sharper sense of hearing than most. Sometimes वैसे वॉन्डर मुझे चाहिए, उड़ने में मजा I hear आएगा. strange crying sounds in the night. There are ghosts? Perhaps. I'm not sure. It's faint, but it's definitely the sound of crying. It comes from far away in the distance, and always carries very raw emotion. It used to be louder and more frequent, but ever since you arrived in the village, it doesn't seem to happen as often, and when it does, it's much quieter. I have to focus really hard to make it out. I confirmed this with the guards on night duty. They also have someone with a good ear, and he's heard similar sounds at night. But because we're in the middle of a desert, he would rather believe that they are the cries of beasts than ghosts. If you are flying, don't wonder. अरे यार ये तो बहुत confusing है भाई. There's really nothing around these parts, except for an उड़ने से old थोड़ा फायदा हो hospital जाएगा not far मुझे. from the village. बाबा जंप नहीं करना पड़ेगा इधर उधर. I think they used to use it for treating Elazar, but it's been abandoned for years. अच्छा उसके उड़ने में स्टेमिना खर्च होता है क्या? नाइस गो. मैं तब तक रिसर्च करूँ तो थोड़ा सा देख तो क्या ही सीन है. देव भाई काजुआ यहाँ से हम यहाँ जा सकते हैं. यहाँ से भी यही रहेंगे. मिकासा आज नेट हो गई. कैसे हो भाई? भैया मैं बढ़िया हूँ. मिकासा तुम कैसे हो ये बताओ. या तो डिस्कशन होगा कि नेक्स्ट बैनर में क्या पुंग करना चाहिए. क्या करना चाहिए मेरे को समझ नहीं आया यार. कोई सजेस्ट हो. इस तरह यहाँ पे भी नशे में. यार एक तो ना यूट्यूब पर भी कुछ दिखा नहीं रहा ढंग से. तुम मेरे को वो वीडियो सजेस्ट करना कुछ जो तुमने देखी है. भाई वो मुझे वीडियो एक बार भेजना तो मैं देखूं, क्योंकि मुझे तो ये वही दिखा रहे सेम चीज़ें. अभी भी मुझे वो पुराना बैनर ही दिखा रही सब. एक्करमैन ये तो यार मीसा अमान मिकासा ये का होना चाहिए था. रोबोट मतलब मैं समझा नहीं. मैं कहोगे ना नया जो बैनर आएगा उसकी बात कर रहे हैं हम, कि नए बैनर को कौन सा पुंग करना चाहिए.
You can't run. Nice and spicy. Into the wind. भाई मैं कंफ्यूज हो गया कि कौन सा पुंग करना चाहिए। अरे यार एक तो ये पता नहीं कहाँ से आ जाता है, ये स्टोन मांगा मेरे से मरता ही नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है इसकी। एक तो ये इस पे वाटर टाइप बेस्ट होता है क्या स्टोन पे? रुक जाओ भैया। स्टोन पे कौन सा कैरेक्टर अच्छा होता है? Fallen leaves adorn my night. जियो जियो पे वही जियो पे यार थोड़ा पावर बढ़ा देते हैं। कहाँ है ये? तो फ्रीज नहीं होता एक तो ये बहुत हो गया। पाएगा ही तो oh yeah nice As one with wind and cloud. यार इसमें तो आइस में अब मस्त मार रही है, वो जा रही है, बहुत अच्छा डैमेज देगी इसको। अभी देखना गुजारी का वेपन अच्छा है जो कि प्रभा भाई जो तुमने सजेस्ट किया। अभी भैया रुको एक मिनट। मर गया ये माइक को माइक। Super strong bandits? Or monsters taller than buildings dropping out of the sky? Or, you know, something like that. You look super serious. We gotta stay on our A game too. This is the one. एक्टिवेट कर भाई। अच्छा मुझे उनका मेरे को स्विच करना पड़ेगा किसी न किसी में। Let's go in and take a look. I start Genshin story from starting again. एशिया में गो फिर ताकि हम भी साथ में खेल सके, हम सब भी हैं यहाँ पे। तुमने फिर से यूरोप में तो नहीं किया? अमेरिका में, यूएसए में। Patience. Shawnee says she only hears the crying at night. We have time to burn. Until then, I'm taking a break. And just like that, he sits down. Wait, he even brought a book to read? What are you reading? Let Paimon हाँ मैंने देखा उसका ट्रेलर देखा जेंशिन इम्पैक्ट एनिमे का। पाइमोन होती है उसमें स्टार्टिंग में। नहीं एशिया में सही है, एशिया सही है। कितने गए हो गए तुम्हारा अभी? The natural position, which is the positional propensity of an entity in natural motion, in contrast with an object in forced motion? Huh? When free from external influences, every entity displays the tendency to follow its natural trajectory? So, you got that? Oh, Paimon gives up! You keep reading your books, see ya? नहीं तब तो कंग 16 हो जाएगा, इजी है फिर तो। How is he so relaxed? Look at him, reading an impossible book in a creepy place like this. कैसे? भाई यार सारे कैरेक्टर अच्छे मिल जाते हैं उनको, मुझे नहीं मिलता यार कोई भी अच्छा कैरेक्टर। भाई ये क्या है? Hey, Paimon's your Tibet travel guide. Paimon knows plenty of useful stuff already. And anyway, it's not Paimon's fault that the books people read in Sumeru are so complicated.
getting so sleepy. क्योंकि एक मिनट, मिकासा तुम एशिया में नहीं, एशिया में तो है मिकासा, उसने कहा एशिया में भाई, यूरोप में थोड़ा ना है वो, एशिया में है। There it is. और मैंने क्विकी बैनर पर पुंग किया, 5 स्टार वेपन आ गया था 10 पुंग में भाई यार, जगाओ सबको। Paimon's not seeing anything. It's from below. But there's no way we can get down there. Something is off about the interior here. मेरी 30-40 की पीटी है भाई, अगर तुम्हारा ना वो एक सेकंड प्रभाव भाई, एक बात बताओ, तुम्हारी जो वो है एशिया आईडी, उसका यूज़ तो है नहीं, तुम्हारे में कोई कैरेक्टर लिखने का मुझे ट्रांसफर कर सकते हो क्या तुम, ऐसा कोई है? क्योंकि नेक्स्ट जो बैनर आ रहा है उसमें दिक्कत तो आएगी मुझे, तो क्यों ना तुम में अगर वॉन्डर निकल जाए तो तुम मुझे ट्रांसफ़र कर देना, तो मैं दूसरे पे पहुँचूँगा। अच्छा जगह नहीं, अरे मैं ऐसे मजाक करूँ। अरे मेरा बताओ, मैं अपनी पिटी कैसे चेक करूँ? हिस्ट्री में कितने की पिटी है पता कैसे चलेगा? काजुआ निकलना है, ओके ये तो कम हो जाएगा इस साइड, इधर देखने क्या, 1 2 3 4, हाँ मतलब 6 7 8 9 10 11 की पिटी है मेरी, 10 तो ये हो गए, और एक काजुआ के बाद एक में पिटी 11 की है। अच्छा ये हिस्ट्री से उल्टी क्यों आ गई मेरी? इस साइड हिस्ट्री तो इस साइड बढ़ती है ना, इस साइड बढ़ती है हिस्ट्री तो, और मैं इस साइड दिखा रहे 1 की साइड दिखा रहे मेरे पास हिस्ट्री, 1 5 5 10 और एक 1 यहाँ 11 की पिटी है मेरी भाई, 4800 वेस्ट हो गया मेरा तो। I'll ensure you're safe. Like a lamb to the slaughter. Boba, get them! The wind knows me. Where do you think you're going? Nice and spicy! One with nature. You can't run! What a nuisance! Wind Strider. Into the wind.
वो नेटवर्क में कोई इशू हो गया था अचानक से, मेरे को रिस्टार्ट करनी पड़ी गेम पूरी। गेम भी स्ट्रीम भी हो गया, अब ठीक हो गया, फिक्स हो गया, फाइनली वापस आ गई। अरे यार मेरी फाइट रिस्टार्ट तो नहीं हुई ना। Time to go. Fallen leaves, adorn my night. Punishment. मेरी बंटी भी यूज हो गई सारी सारी। One with nature. Judgment. You can't run. Into the wind. One with nature. As one with wind and cloud. Ride this off the side. Wind strider. Boba, get them. The wind knows me. ये आखिर कहाँ पे किसी को पता क्या किसने किया क्या क्वेस्ट ये? दो तो यहाँ पे
इसके नीचे तो नहीं है? ना ऊपर से करना पड़ेगा अनलॉक। यहाँ कहीं अनलॉक का ऑप्शन आ रहा था बीच में। अच्छा ये नहीं, मेरे पास की नहीं है। आखिरी में बाहर ही गई पे शायद। ये हाँ आखिरी तो ये है। एक और है, वो पता नहीं कहाँ है। कोई है नहीं क्या चैट में जो जिसको पता कि आखिरी कहाँ पे होता है? यहाँ तो नहीं है, नहीं मेरे हिसाब से तो नहीं है। उसके ऊपर हो सकता है, सबसे ऊपर जो टॉप पे एक एरिया दिख रहा है। यहाँ देखना एक ही है। मैं बस वो बॉस फाइट कर रही हूँ। शारिंगन नहीं यूज़ कर सकता। मैंने शारिंगन अवेक नहीं किया अभी तक। बारबरा कहाँ है ये? मैंने एक पॉकेट यूज़ किया है, पर ये मेरे देखो थंब के जहाँ पे जॉयस्टिक है उसके पास वो दिखा है फूड। वो मैं फूड का जुगाड़ तो वैसे यहाँ पे भी हो जाएगा, ये भी तो खाने के काम में आएंगे। चिकन दो। वो इन्होंने चिकन नहीं दिया, वैसे चिकन देती है वो, मतलब वो मटन देते हैं और ये विंग शिट है। मुझे पता नहीं था इतने इजी एनिमी, मैं स्विच ही नहीं करता बाबा में। एक्टिवेटेड। अब कहाँ जाना है? ये अनलॉक हो गया क्या नीचे? ये तो अभी भी की चाहिए, की तो नहीं मिली। ये अनलॉक होगा नीचे। इन्वेस्टिगेट भाई, रीड करूँगे। पेटेंट में 23 वेरी गुड। मेरा तुमने 300 प्रीमोस का रिडीम कोड यूज़ किया क्या अपना? रिडीम कोड है 100 के तीन रिडीम कोड है 100 प्रीमोस के। टोटल तुम्हें 300 प्रीमोस मिलेंगे। अरे तुम्हारा एपिसोड कब ये बताओ? तुमने कहा था कि आ जाएगा जून में। तुमने कहा था कि 25 तक आ जाएगा, 20-25 तक। आज 24 हो गया है। हाँ बट नहीं कर सकती। ये तो पढ़ चुके हैं, फिर से पढ़ा गई ये सेम चीज़। और रिडीम कोड यूज़ किया तुमने? 300 प्रीमोस मिलेंगे उस पर। उसको यूज़ करने से 300 प्रीमोस आएंगे हमारे अकाउंट में। ये भी सेम है क्या? Time to go. वाह से है भाई। अच्छा मैं अभी न्यू अकाउंट, तुम्हारे ओंगडे अकाउंट की बात करूँ मैं, न्यू में तो नहीं कर सकते। There's someone over. Good idea.
Let's approach him slowly. भाई वो मॉन्स्टर भी हो सकता है, वो आता है। Wait. You're... He can't speak, and his eyes are unfocused. But he looks too young to be पुराना anyone's नहीं आएगा। grandfather. Also, भाई सैड है भाई, ये सैड होता है सिचुएशन जब तुम अकाउंट में यूज करते हो। Didn't expect to see him here. You know him? He's Razak, a senior of mine at the academia. He's a scholar too? Is he the kind that holds up in a forest and mumbles stuff about training? No. And that's the problem. Razak was never involved in any of those things. He never trained in the forest, let alone reach Satyavada life. ट्राई करो कि मैक्सिमम 5 स्टार निकल जाए। I'm trying to start it again. तुम इस बार फोकस करना कि तुम रिमोट वेस्ट ना करो, तुम अपने पुराने अकाउंट से जो भी तुमने सीखा है वो इसमें अप्लाई करना कि क्या बेस्ट होता है, कौन से कैरेक्टर बेस्ट होते हैं, तो उन्हीं में कौन करना। For whatever reason, they left Razak here. Perhaps they simply didn't have time to come back for him. There are drag marks on the ground. They're clearer by the doorway. Someone was forcefully drawing a cart that was loaded with something heavy. Loaded with... That is one possibility. It looks like they were मेरे in a पास hurry, अभी as if they were afraid of being तुम्हारे पास caught. जोई मिया थी ना उसमें, जोई मिया या जय मिको दोनों में से कोई एक था ना उसमें। Razak hiding in a corner. The symptoms are identical. Looks like we found living क्या proof. निकला था, जय मिको या जोई मिया? कौन सा कैरेक्टर निकला था तुम्हारा? Allow me to jog your memory. Recall your time at Port Ormos. Don't you think his symptoms look familiar? नहीं, मेरे पास बैनेट था। बैनेट था, बैनेट तो मेरे पास भी नहीं है। कोई 5 स्टार नहीं निकला उसमें। चलो इसमें तो तुम्हारा 5 स्टार निकला है ना, एक कितना, एक या 2 5 स्टार निकले ना इसमें, तुम बता रहे थे। Now that you mention it, they're acting the same way. Correct. The academia is behind all of this. It isn't difficult to deduce their rationale. I most बैनेट, बैनेट को खोने का दुख तो है, The academia बट तुम अपना रिडीम क्या हो, स्टारडस्ट सेव करना। emphasizing the role of the village keepers, the mad scholars इन who were फ्यूचर exiled बैनेट to our आएगा village. These स्टारडस्ट rumors शॉप were के all अंदर। the persuasion that the radicals needed, and those based in चाइनीज our village न्यू ईयर पे leapt आता है into वो, action. Unbeknownst चाइनीज to न्यू ईयर them, पे वो of शायद course, through स्टारडस्ट rounding में up और the उसमें आता scholars, they है were शॉप actually में, helping the academia. तो तुम ले As सकते हो well as उसको। being able to exploit the radicals for their 5 own स्टार ends, वेपन है, this scheme has वेपन one further किस पे यूज advantage कर to सकते the हो तुम? academia. बेस्ट कैरेक्टर कौन सा है उसका? All the risks वो and कैरेक्टर निकाल। responsibilities are offloaded onto King Deshret's followers. Life for the desert dwellers has been brutal ever since King Deshret's death all those years ago. Beneath the surface, feelings of desperation are widespread. स्टार्टिंग में आ Many जाएगा। would give everything they have for the prospect of something better. Anyone looking to exploit that for their own ends simply 5 needs स्टार to make a वेपन में तो few 5 empty स्टार वेपन क्या, promises. 5 स्टार कैरेक्टर मेरे निकले Even if नहीं उसमें से। complications arise, people तुम्हारी will see किस्मत that अच्छी है। those involved are all followers of King Deshret 5 and स्टार look for no for further Ember। explanation than differences of belief. वो है क्या वो कोई? A deep-seated mistrust of the desert and everyone in it by the rest of Sumeru will make sure नहीं of तुम उसमें that. भी यूज, तुम The एबीस notion of कहो an ना, academia plot wouldn't even cross मतलब their अभी तो नहीं कर minds. सकते तुम It may seem एबीस like से a simple सोच स्मॉल strategy, but it is able to work सोच wonders स्मॉल under तुमको वो Sumeru's मिलेगी जो current मेरे पास है, circumstances. डेंडो टाइप की जो That makes a lot है, of उस पे sense. वो वेपन It's in line with ज़्यादा the बेटर village रहेगा chief's theory उससे, too. But एम्बर से। there's still one very important question. Wasn't it the academia that brought the scholars to Aru village in the first place? Why does it want them back now? Throughout this process, one thing has changed. The scholars' identity. First, they were scholars. Then, they became I don't lunatics. think After on that, eating they were wish on my exiles. first. And finally, they मैं become तुम्हें missing एक बेस्ट persons. एडवाइस दूंगा मिकासा, मीसा एक तो बार मीसा माने मुंह से निकलता। 8 एक पुंग वांगे जो 2 बैनर तुम्हें मिलते हैं ना, उन पे मस्ट है वो कहो तुम। मेरी सेकंड आईडी के अंदर
उसी पुंग पे ही मेरा 5 स्टार निकला था, और उसी पुंग पे मेरा पता है क्या निकला है, जिसका जेड चैम्बर होता है, वो कैरेक्टर जो स्टोन वो जियो टाइप की है, जिसका जेड चैम्बर है वो। An exile is still patently a living, breathing human being. And but when someone becomes a missing person, फर्स्ट तो वो that गई, is brought into question. उसके बाद If you can't find someone, एक you have no वाटर way of टाइप है, knowing मोना what नहीं है, exactly दूसरी है happened जो to them. स्वॉर्ड यूज करती है, वो भी That अच्छी makes है। missing people मैं an ideal तीन resource. कैरेक्टर उसमें बेस्ट निकले हैं, तो वो तुम 8 में करेंगे, तुम बेस्ट निकल सकते हो उसमें से। One possibility is that the information in their brains could be extracted into knowledge capsules. Extracted? You mean hand knowledge comes from people's brains? With the technology of the Sumeru Academia, it's entirely possible. Perhaps the process caused them great suffering, which is why they cry out in the dead of night, when no one is watching them. So, the human brain... Nope, nah, Paimon doesn't want to think about this. मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है, तुम ट्राई करो उस पे। I'm the Academia's scribe, after all. I'm familiar with their projects. Anyway, judging by Razak's state, the contents of a divine knowledge capsule were extracted from his mind. But something went wrong in the process. Or perhaps his curiosity got the better of him, and he used such a capsule for himself. Paimon's a little हाँ वही confused. वही वही। Can they just use anyone's brain? हाँ आप कहो, तुम उसमें बेस्ट निकल सकते हैं, तुम्हें अच्छे कैरेक्टर्स मिल जाते हैं उसके अंदर से, वो मस्त है अभी के लिए। मैंने भी स्टार्टिंग में मेरे वेस्ट हो गए थे, बट मेरी सेकंड आईडी पे उसमें अच्छे कैरेक्टर्स निकल गए। Realize the answer. That's right. To some scholars, gaining knowledge about the gods is their entire life's pursuit. Extracting canned knowledge is just one of the extreme measures they turn to. However, I can't help but wonder, भी निकालने का मन what do है, they बट मेरे seek पास to वो gain नहीं from है, divine Primos। knowledge? The Academia is going out of their way to look for forbidden knowledge. But what is their ultimate goal? I've spent quite some time trying to analyze the contents of the divine knowledge capsule, but to no avail. It seems like my way of thinking is too different from theirs. You mean you're not even slightly interested in getting your hands on this forbidden stuff? All scholars seek to expand the horizons of knowledge, but I'm not particularly interested in gods, so I don't share their degree of zealotry. Extracting information from people as if they were lifeless objects? If this is the direction of academic progress, then the Academia may as well shut its doors. दिक्कत ये है कि जो नेक्स्ट बैनर आएंगे ना 3.8 में, Of वो बहुत course, अच्छे हैं। the Academia's actions run contrary to their rules. Whether it be academics or knowledge, everything has its boundaries. 3.8 का फर्स्ट एंड If सेकंड those फेज lines दोनों are ही crossed, बेस्ट है। the rules and order that govern फर्स्ट everything फेज in में the भी world दो will ऐसे be हैं, destroyed. वॉन्डरर और This एक matter needs to नहीं, be फर्स्ट फेज corrected, में है वॉन्डरर just like और एक fixing a कैरेक्टर है जो typo in कि a book. बहुत टाइम बाद वापस आ रहा है, और सेकंड फेज में है कोकोमी। Not to be callous, but no. My criteria are a little more मेरे पास वैसे restrictive प्रीमोस कम than पड़े that. हैं फर्स्ट फेज में। There is no shortage of अगर suffering मैं in एनेथम Sumeru, पे यूज and करेंगे, the और same can एनेथम be अगर said for निकल the गया, rest of Tibet as नहीं well. निकला तो मेरी पेटी बन जाएगी, वो What do you टेंशन plan नहीं। to do अगर about एनेथम that? निकल गया तो बहुत Save every last person? क्योंकि उसके बाद मेरे पास वो नहीं होता है, वो नहीं रहेगा प्रीमोस कि मैं अपनी पेटी बना सकूं फिर से। अभी तो तब भी 11 की पेटी है। You can say that. Simply put, I don't blindly place my faith into strength or heroism. I do what I want. The divine knowledge capsule is something I want to investigate in full. That doesn't mean I'm willing to take action for the sake of a few strangers. गाइडन का आएगा क्या? नहीं, गाइडन नहीं आएगी अब। जोकर भाई वेलकम बैक। गाइडन की बात हो, जोकर भाई वापस में, ऐसा हो ही नहीं सकता। गाइडन का प्लान कैंसिल हो गया है, आई गेस। You're probably गाइडन से right. पहले वॉन्डर Though I must say, I quite enjoy मुझे this feeling वॉन्डर of being चाहिए, beyond मुझे वो one उड़ out. सकता है बिना Uniqueness आइडिया is के। also an asset, is it not? Wow, that's a great way to think about it. Paimon's really impressed.
यंगन भाई तुम एक काम करो, सुनो, तुम्हारे लिए सबसे बेस्ट रहेगी एम्बर। I'm just a more likable जोकर भाई, person than her in general. you deserve There's एम्बर। nothing more to it than that. एम्बर, डोरी, क्विक्वी एंड पाइमोन। He won't last long if we leave him here. Let's take him with us. We'll work out our next step after we return to Aru village. नो जोकर भाई नहीं, सोचना भी मत। अगर तुमने एक मिनट में अपनी एचपी बढ़ा के जाओ, अगर तुमने वॉन्डर गया यंगन की तरफ देखा भी तो वॉन्डर तुम्हें नहीं छोड़ेगा। मिकासा इस टैंग पे मत जाओ, भावनाओं पे जाओ, भावनाएं जुड़ी हुई हैं, भावनाएं देखो तुम, भावनाएं देखो, भावनाएं भाई दोनों मेरे है भाई, तुम्हें बता देना दोनों मेरे है भाई। यंगन राइडन पंगस नहीं, राइडन पंगस 20 more characters from Genshin is mine. Himiko पंगस 10 more characters in Honkai is mine. तो टोटल 32 कैरेक्टर्स हैं जो मेरे, उनके सिवा जिनको चूज़ करना है कर सकते हो। आई नो आई एम ग्रीडी बट दैट्स द फैक्ट। कभी कभी हमें ग्रीडी बनना पड़ता है। यंगन मेरे पर आएगी। ओ भाई तुम्हें क्या करना है मिकासा उससे? मिकासा यंगन का क्या करोगे तुम? हम इन गेम की बात नहीं कर रहे हैं। You must be tired. You should rest. I just got single wounds. सही है। What's the situation? हमें यंगन की बात इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि वो इन गेम बेस्ट है। Unfortunately, somebody who's too young to take on the role of Isak's grandfather. Nevertheless, he's one of the people we're trying to find. You tell everyone that what you saw. पपीता पड़ा है भाई इनके टेबल पे। At one point in time, the abandoned Elazar Hospital served as the academia's site for extracting divine cant knowledge. Pretty much. जोकर भाई तुम Their क्या ही plan must have कहते been हो यार? implemented at some point भाई before बातें we सुन के arrived ना, at Aru village. Since divine भाई cant बातें कि तुम्हारी knowledge has been माइंड in साइड बिल्कुल मेरी circulation for तरह a है। while now. फिर मैं देखता हूँ नहीं यार तुम्हारी माइंड साइड कुछ ज़्यादा ही मेरे से They है। fled once we were headed to the village. Almost as if they knew we were on their trail. Why is that? जोकर भाई अब तुम पता मैसेज डिलीट कर सकते हो पर इसमें से डिलीट नहीं कर सकते। मैं दिखाऊँ सबको, देखो जोकर भाई की सोच देखो तुम सब, ये देखो। यंगन मेरे पास आएगी ये मैं बोल गई। मिकासा यंगन तुम्हारे पास इन गेम आएगी ना, हम इन गेम की बात नहीं कर रहे, हम हकीकत में बात कर रहे हैं। अगर यंगन रियल लाइफ में होती तो किसके पास होती? Looks like none of you have realized wherein lies the issue. Sino, you're the reason why they can predict our movements. Wait, what's that supposed to mean? Choose your next words very carefully. Oh, that. It is simply a logical inference. I have my reasons. So what you're saying is, Sino's the mole. Interesting. And here I thought you were the most suspicious one, I'll hate them, since you were always acting alone. You have a point, but I realize something as we were returning from the hospital. नहीं यार ऐसे नहीं है। Like any of us. मैं यंगन What are you trying to say? को एच की वजह से नहीं, मैं यंगन को इसलिए कह रहा था ताकि General Mahamatra. you know घूमना फिरना कैरेक्टर वाइज कह रहा है तुम तो कुछ। As a mantra, तो you are मैं no doubt यंगन privy से to certain kinds of information. पूछती हूँ कि वो Before you can take action against someone, you are required to have all the facts जस्ट वन available, टाइम। अरे including यार less तुम than तो यार यहाँ savory बिजनेसमैन की details. बात करने लग जाते हो यार जोकर Simply भाई। put, the academia पूछिए has अमिका सर। traditionally allowed you access to a wealth of sensitive पूछो information. Knowing their modus operandi, wouldn't you expect them to जोकर भाई take जस्ट वन precautions टाइम ये against क्या you? ये कोई वो है क्या कि भाई एक बार अपनी बाइक दिखा दे? If you want to raise a vicious wolf, you need to make sure that you can avoid its ये क्या bites. सिस्टम सेट किया है भाई जोकर भाई तुमने कि भाई एक बार अपनी बाइक दिखा दे? बाइक वाइक थोड़ी है, जस्ट वन टाइम क्या होता है? It's not that simple.
The Academia has eyes all over Sumeru, but they have a मैंने पूछ special लिया किसकी protocol बात for किसकी dealing साइड with आया you. Every so often comes a Nyargarbaha Day. On this day, the Academia सा दिया enters उसने? new information into the Akasha through knowledge कैसा? captures. I remember seeing the thick notebook next to the control क्या panel. बाइक नहीं है जो कि भाई Its contents were all about the General ओ भाई जो Mahamatra, कि भाई तुम his चैट डिलीट कर रहे activities हो पता है throughout और the यहाँ से day, चैट डिलीट नहीं preferred थी मेरे पास methods of से ये देखो enacting judgment, everything. You're saying that the Academia entered my Robot. information into the Oh, Akasha too? damn. But what's the point in doing that? जो कि भाई My actions aren't important Nice. enough to be added into the Akasha. The Akasha is capable of computation. The Akasha's algorithms are entirely capable of predicting your movements using the data entered. When you would depart, the route you would follow, your destination. It knew all of this. It predicted my every move. The Academia has been watching you longer than you think. However, सैड the जो fact कि that you भाई resigned is proof that their suspicions were well founded. So that's how it is. Sino adheres to his principles so strongly that he's actually a thorn in their side. Tenacity of will and steadfast faith are worthless to the अयो Academia. इट्स जस्ट अ जोक They need scholars who are easily pliable and mindless to go after यार ऐसे anything जोक they can मत मार को profit यार from. सैड हो जाते हैं बंदे जोकर भाई के साथ साथ अब मुझे सैड महसूस हो रहा है कि यार अब तो फिर से वही हो गया 50-50 चांस हो गया Trustworthy ally you are. अभी तक मैं 100 सोच रहा था ओके आई जस्ट नीड वन टाइम सो यू कैन नो Escape अरे because of नहीं भाई ये बाइक थोड़ना भाई तुम कैसे बात कर रहे हो जोकर भाई It's not like any of us would have known. I have an idea. If they predicted my movements, then I might be able to guess where they went. Whoa, you bounce back fast. There is always an opportunity for safety after danger passes. Oh, so that's how it is. Paimon gets it वो now. तो बीच से ही पतंग मिलेगा Academia is trying to ये avoid तो है Sino. सबसे बेस्ट बात है यार हम दोनों ना F2 पे हैं फ्री टू पे हैं तो हमें वो कोई चीटिंग नहीं कर सकता तो जिसकी किस्मत में होगा उसके पास और सोचो इसमें इसके अंदर जेंशिन में They'll want to एनिमे proceed कैरेक्टर्स आ in the जाए तो direction जैसे opposite of where नारुतो I'm वन पीस के कैरेक्टर्स या फिर वो उनकी पावर भी वही है जैसे नारुतो का पावर है विंड जिनको नहीं पता है नारुतो का जो एगमेंट है चक्र है वो विंड है तो वो एनिमो आइकॉन हो सकता है मूफी जो है वो सन गॉड है सन गॉड मतलब फायर तो वो पायरो हो सकता है एरन जो है वो अपना साइज इंक्रीज डिक्रीज कर सकता है तो वो जियो हो सकता है ककाशी सन से वो लाइटनिंग हो सकती है क्योंकि वो चिदोरी यूज़ करते हैं तो वो हो सकते हैं थंडर हाई डिंगीट सो तुम्हारे चैट तभी बट रोबोट आपके आ सकती है चांसेस हैं क्यों ऐसा क्यों है मिकासा मेरे जैसा चांसेस ज़्यादा क्यों हैं I must go. There's also something I want to investigate. Let's go, guys! After him! Please, wait! I want to go too! You want to go too? If so, you have to promise you'll stay safe. हाँ नारुतो एनिमो क्योंकि नारुतो का जो चक्र है वो है ना विंड I'll be careful. विंड and स्टाइल I'm not causing शंके trouble. Everyone, I leave them in your hands. स्ट्रीमर ऐसा कुछ नहीं है भाई मेरा फर्स्ट 5 स्टार 87 पे निकला है नहीं मेरा फर्स्ट 5 स्टार निकला 89 पे निकला है मेरा फर्स्ट 5 स्टार अभी मैं शो कर सकता हूँ Let's go! Remember to pack some food with you. Paimon feels like नारुतो we're कैन बी एनिमो missing एक्स पायरो someone, though. नारुतो पायरो कहाँ यूज़ करते हैं कुरामा पायरो थोड़ा ना है कुमारा सोंग एनर्जी यूज़ करता है वो फायर टाइप थोड़ा ना है 90 का कभी वही नहीं होता भाई जो भाई क्या झूठ गए हो भाई 90 कभी नहीं निकलता है 89 निकलते कभी भी 90 मतलब 90 कंफर्म है पर 90 बहुत कम चांसेस है निकलने का अगर तुम मेरा चेक होगे ना हिस्ट्री चेक होगे तो मेरा जो ये निकला है 10 पुंग में तो मेरा निकला है 89 पे ये देखो क्योंकि 89 और आखिरी जो निकला है सिंगिंग शॉट वो 90 है
उसके बाद मैंने 10 पुंग किया, वो आगे इधर दिखाएगा, दिखा है ना ये, तो ये है 10 पुंग 89 पे निकलने गया। आई गिव यू फोटो, just the tune to accompany them, if you wish to hear. आई गिव यू द फोटो। तो भाई उसमें तो स्टार्ट ऐसे दिखा है ना, एक के बाद एक है, उसमें ये तो नहीं दिखा, नंबर तो नहीं दिखा, चेक करना एक बार, पता चलेगा तुम्हें। भाई तुम 90s के किड नहीं हो भाई, भाई किडनी नहीं है 90s की। Time to go. नहीं भाई रुको भाई, मैं नहीं मान सकता ब्रो, मैं नहीं मान सकता तुम्हारी बात। यार मेरे को कोई स्ट्रीमिंग दे दो, मैं थोड़ा सा वो निकालूंगा अच्छे से कैरेक्टर, वैसे काम तो करता है यार, ये तो मेरे को मानना पड़ेगा। मैंने मेरे 50-50 हाई के भी 20 पुंग में अगर मेरा काजुआ निकल गया है तो स्ट्रीमिंग तो होता ही है। बाकी मैंने वो भी किया था, रिचुअल भी किया था, तो मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। रिचुअल के बाद निकलना है कि स्ट्रीमर से निकलना है, हू नोस। पर मैंने रिचुअल बहुत किए थे, तो शायद मैक्सिमम चांसेस मेरे हिसाब से तो रिचुअल ही है। माइक को यार जिसने नहीं किया अभी तक। So, where do we go from here? Home. Yes. After leaving the village, we should head मेरे straight toward the desert. मैंने 2980 टीमों सेव किए थे। So I know the come desert me. like the back of my hand. Is that because you play here a lot? Yep. One time, मैं यहाँ पे मार Grandpa नहीं almost ग्रैंपा ऑलमोस्ट हमारे डेड हो गए थे, मुझे पता है भैया। 2 मिनट हो गया, यहाँ में मार्क करना स्टार्ट। एक सेकंड, यहाँ पे कुछ है, इस साइड है क्या? अनवॉक करने के लिए हमारा तो वो करना पड़ेगा, मिशन करना है। वैसे वो कोई पजंग सा होगा, छोड़ो उसे। चलो बढ़िया भैया, आगे बढ़िए। FN एडिट्स बाय जो के भाई, टेक केयर। भैया एडवाइस चाहिए थी भैया, एडवाइस में अगर तुम कैसे एडवाइस चाहिए उस पर डिपेंड करता है। बताइए। It's buried in the sand. Looks like we'll need to roll up our sleeves and do some work. The moment that running around everywhere was already enough work. Okay. So, we have to dig it out? Whatever's down there looks like it's buried really deep. These are likely fragments के of an बारे में academia-developed उसका device, डैमेज कैसे something akin to a headset. बढ़ाऊँ भाई। मेरे 37 Looks like डेज there were हुए more इस than गेम one में, village keeper. मुझे नहीं पता They must योइमिया have been या escorted डैमेज this कैसे way बढ़ाते because there are device हैं। मेरे पास fragments scattered योइमिया है around. भी नहीं। Let's split up and search the area. Chances are that we'll find other things मेरे nearby. पास योइमिया नहीं है, फर्स्ट बात। सेकंड बात, मेरे 37 डेज हुए इस गेम में, तो मुझे कुछ ज़्यादा आइडिया नहीं है। हाँ, योइमिया का बो हो अगर तुम्हारे पास, योइमिया का पर्सनल वेपन हो तो डैमेज बढ़ जाएगा। एंड सेकंड थिंग, उसके This वो is देखो कि definitely a तुम्हारे हिसाब device से used उसके to extract बेस्ट divine knowledge. आर्टिफैक्ट How क्या did है। it end up buried in the sand? बाकी योइमिया can't वो have है, been part आर्चर of है, the तो उसका plan. डैमेज की ज़्यादा They must have been attacked along डैमेज the तुम way. एक्सपेक्ट कर ही नहीं सकते। Wait, what? देख के बताओ कौन सा आर्टिफैक्ट करना चाहिए। मुझे नहीं पता भाई आर्टिफैक्ट के बारे में, मैं इसने सजेस्ट करूँ क्योंकि मुझे किसी ने सजेस्ट किया था Razak didn't आर्टिफैक्ट। display any signs of starvation or... We should be able to catch up. One more thing. Given that the device had been entirely covered by sand, I believe the attack must have happened prior to the sandstorm. Let's keep going. We can't have gone far. तुम मुझे भाई, तुम उनमें से तो नहीं हो ना यार जो सिर्फ अपना अकाउंट शो ऑफ करने आते हैं, जो भी ना टू शो दे अकाउंट्स की। भाई देखो मेरे पास इतने सारे 5 स्टार्स है। वो यहाँ पे वो है पोर्टल। एक सेकंड, मैं यहाँ पे आया था बट मुझे ये मिला नहीं था पोर्टल।
शायद नीचे होगा। केव है क्या कोई नीचे? इससे भी नीचे। चलो भैया, भेड़िया भैया, इन भाई का अकाउंट चेक करने थे और मैं कॉल नहीं कर सकता अभी बहुत देर तक, जब तक ये मिशन कंप्लीट नहीं होगा। तुम्हारा अकाउंट क्या है? 8814282990। रैंक 53। भाई तुम मुझसे एडवाइस लेना है, मजाक कर रही है। मैं बताऊँ, तुम ना शो ऑफ करने आए हो अपने अकाउंट का वेपन। एक मिनट, यहाँ से देखते हैं। मैक्स अटैक यार तुमने और कितना चाहिए यार? 8, उसका बेसिक अटैक 832 है, तुमने उसमें इतना प्लस किया, इससे ज़्यादा अटैक कैसे होगे तुम? क्रिट 8 भी तुम्हारा ऑलमोस्ट सही है, 54% है, 54% ही कह सकते हो क्रिट 8 तुम्हारा। क्रिट डैमेज भी तुम्हारा सही है भाई, अच्छी शो ऑफ टेक थी। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक ये पोटंग कहाँ पे? मेरे को ये पोटंग नहीं दिख रहा यहाँ पे। ऊपर है क्या इसके? इसके ऊपर है क्या ये? इसके ऊपर जाएंगे कहाँ से हम? बहुत ऊंचा है। कहाँ है भेड़िया भैया? चलो रोबोट रोस्टेड मी इन जस्ट अ सेंटेंस। हाँ रोस्ट कर दिया मैंने तुम्हें? कैसे मिकासा, मैंने तुम्हें कैसे रोस्ट किया? It sounds like an argument. मैंने तुमको कैसे रोस्ट किया है? अच्छा 37 डेज। अरे ये सच है, ऐसा नहीं है कि झूठ है। मैंने 37 डेज में किया, तुम्हें पता है गेम। Very interesting. Let's listen in. If you had informed me sooner, there'd be plenty of अच्छा room. वो We would never. Scholars. You don't know as much as I do. Need me to... I knew it. That's our deal. वो अकाउंट शो होंगे सेंटेंस में। अच्छा मैं Didn't you say you'd help me find Grandpa? मैं unintentionally किया है मैंने जो भी किया। Well, look who's here. Ain't that something? This complicates things. You've betrayed our village. So, this is the great General Mahamatsu. Dear, you'd be better off as my assistant than hanging around with this वो अकाउंट शो Seen for yourself. पता है उसको कहा था तुम्हें means नहीं। and methods, and my ideals are far more admirable than theirs. I'm not the type that's easily swayed, Raman. You of all people should know that. Wait, what's going on, Dia? Whose side are you on here? Shut it, Paimon. And the string is. It doesn't matter. Whichever side you भाई pick, पाइमोन को शट अप का भाई, nothing can deter us from the सेटिस्फाई grand महसूस हो mission गया मुझे, of सेटिस्फेक्शन नहीं है resurrecting मुझे। King Deshret. बहुत बकबक करती है। Once our Lord of Old returns to this land, we will have a new beginning. Face the facts, Raman. It's not gonna happen. You should understand that more than anyone. रहमान नाम है उसे हम taught you nothing about placing रहमान। hopes in a ruler? I'm a desert dweller and a proud follower of King Deshret. Whether I live by the edge of the sword or in peaceful comfort, my soul will always carry this conviction. It's not too late yet. The village mad scholars aren't gonna bring King Deshret back to life. You don't understand, my dear lady. Pursuing our faith is our purpose in life. Even if the chance of success is 1 in a million, we must be willing to give everything we have. मतलब 90 का नहीं होता ना, मैं 90 पीटी नहीं बढ़ती है, तो 90 में से मेरे 10 हो चुके हैं, मतलब 80 पीटी। Your Eremites, which you've worked so hard for all these years?
320 माइनस कर दो 1000 We've waited a long 1600 time for this day to come. नहीं The sun 16,000 में and से the moon no 320 माइनस longer हो गया shine here. All you see now is 2,200 cracks in this desiccated land. और हमें चाहिए But fate 12,800 finally dealt me a टीमों hand to play against the academia. With these scholars in our custody, ये we'll 5 stop स्टार the वहाँ academia's बहुत forces सही and है fight our way हाँ beyond the 5 स्टार वहाँ बहुत wall सही है of मैं बताया तो तुम्हें मैं तुम्हें कैरेक्टर दिखाता हूँ उस पर यूज़ कर सकते हो तुम Think about it. The Academia controls the entirety of Sumeru. Your powers are negligible in comparison. If you still don't believe me, then try asking वो these पे two चेक करो men. तुम They're निकासा also कि उसमें against the क्या शो कर रहा Academia, है but neither of कि them are उस as मतलब arrogant वो as किस you are. एंगमेंट टिकिंग ये बना हुआ है You look more like सारे pawns of the आर्टिफैक्ट सारे academia to बोस पे me. एक एगमेंट पे बूस्ट मिलता है तुम देखो वो किसको बूस्ट देगा Greater Lord अगर वो Rugadavada have to आइस टाइप में बूस्ट आइस को देगा बूस्ट तो गान्यू में बेस्ट रहेगा Your पायरो को God देगा तो abandoned एम्बर all honor और and योनिया पे betrayed बेस्ट King रहेगा Deshret. डेंडो पे देगा तो We सेनिया पे desert बेस्ट रहेगा dwellers जो कि मैं भी will यूज never कर रहा trust the था likes of you. डेंडो पिंगल्स को नाइट It's अप करने के impossible लिए to communicate with someone so hostile. Perhaps we should. Do you really believe that by kidnapping the scholars, you'll be able to negotiate with the academia? स्टार वेपन मैंने एम्बर को दिया है स्टार वेपन की इंफॉर्मेशन देखना कि वो किस पे बेस्ट है These people have no value as bargaining chips, but I could be persuaded to take their place as your next hostage. These scholars were exiled from the academia. I, on the other hand, am their current scribe, and will be a much greater asset to you. Wait, you can't be serious. So, you want to trade places with the hostages, do you? Precisely. Any wise person would अभी gladly मेरे accept पास my offer. उतने कैरेक्टर्स भी तो नहीं हैं हाँ, ये भी तो है पर अगर अपग्रेड करोगे उस वेपन को तो बेटर है क्योंकि इनसे किसी न किसी को दोगे तो वो However, I get the chance to observe the तुम्हारा scholars. एक Perhaps you रेंज can find out अटैकर the में truth. सबसे बेस्ट हो सकता है स्पेशली अगर तुम्हारे पास योइमिया हो तो योइमिया Think हो you गया can तो talk me over with that confident look of yours? I'm not trying to persuade you. I'm using this as a means of joining forces against the academia. You are the scribe. What do you have against the academia? Not all desert dwellers believe in King Deshret, and the same applies to the academia. Why must all knowledge seekers तुम्हारे पास अभी approve कौन-कौन of से the कैरेक्टर हैं academia's way of बताते doing वैसे things? You academia scum. Every last one of you is nothing but a hypocrite, just like everyone else on the other side of that wall. I've made myself clear enough. अदर साइड I ऑफ won't दिस listen वर्ल्ड to another word from the एक मिनट Dendro रुको Archon's people. एक मिनट ये तुमने सुना मिका सर न्यूमीन एम्बर काया और निसा ये तो है तुमने ये पढ़ा जो इसने भी कहा है एक बार ये पढ़ो इसने क्या कहा है अटैक ऑन टाइटन की बात नहीं की इसने जैसे यू एकेडमिक्स कम एवरी लास्ट वन ऑफ यू इज नथिंग बट अ हाइपोक्रिट जस्ट लाइक एवरीवन एंग्स ऑन द अदर साइड ऑफ द वॉल लाइक उसमें कहते नहीं है कि अदर साइड ऑफ द वॉल आर एज टाइटन्स क्या मुझे तो सबसे अच्छी मीम वो होती है मतलब आई मीन या मीम या वीडियो कह सकते हो जब ये होता है दिस वॉल इज नॉट बिल्ड टू प्रोटेक्ट ह्यूमन फ्रॉम टाइटन्स दिस वॉल इज बिल्ड टू प्रोटेक्ट टाइटन्स फ्रॉम लीवाई वो जितनी भी इस टाइप की मीम्स आती हैं ना बहुत तबाही होती हैं Not so fast. I'll hate them. Do you stand by everything you just said? I never make empty promises. You know you're making a dangerous decision, right? I do. Good. Raman, hear me out. These people are my friends. Maybe you can't take the followers of the Dendro Archon at their word, but what about me? Do you trust me? We've known each other for years. Of course I do. In that case, I'm willing to vouch for their honesty with my right arm. Come on, Raman, don't be a coward. If you're serious about taking on the academia, you need to steel yourself. You can't be afraid. An arm from the Flame Mane. You've piqued my interest. What if you refuse to oblige? What should I do then?
No one's a fool here, dear. We're mercs. रहमान है उसका नाम Mercs भाई. don't tend to live long unless they have their wits about them. RAHAM. You're not wrong, but this is different. I रहमान promised है my कि friends क्या that है? एक we'd मिनट. bring back the village keepers together. हाँ Let's रहमान do तो it है. right here then. Give me your right arm as proof of your resolve. Don't listen to him! He's not even trying to negotiate! He just wants to make things more difficult! That's fine. Are you crazy? We came here to save lives. One arm for that अरे many वो people is still a उन्हें pretty ट्रांसलेट good कर deal देंगे if you ask me. Raman, I'm holding up my end of the deal here. You'd better not let me down. Sure. Go ahead and cut off her right arm. No! ये बेवकूफ है भाई. मैं तो कभी ना काटूं. Think of something! You don't have to go this far. That's not for you to decide. Do it! तो ये बहुत अजीब है. इनकी माइंड साइड क्या है मैं समझ था भाई. Stop! वो भाई मैं नहीं चाहता था दिया का हाथ कटे. What's wrong? Can't do it? Flame Mane, you and I are both desert folk. Cutting off your arm is no different than cutting off my own fingers. Where's the sense in cutting my own kin to pieces? You've shown me that you're serious. मैं नहीं चाहता था कि Go on now, take your friends and leave. अरे यार स्किप हो गया. फिर तो ना मेरे लिए सबसे मुश्किल जो पार्ट होता है ना किसी भी गेम में वो ना थंबनेल बनाना होता है. जैसे मुझे गाइडेंस शोगन का जब मैं थंबनेल बनाया था ना तो मुझे इतनी सारी गाइडेंस शोगन की वो आ गई पिक्चर्स मेरे सामने सर्च करने पे कि मैं चूज़ ही नहीं कर पाया कि कौन सा रहेगा. मैं आबरा का डाबरा करके जो बेस्ट है मेरे सामने आ गया मैंने वो यूज़ किया. And I just have to hold my claymore with my left arm. ओ भाई ये सही है. Okay, I'm sorry. But sometimes when you're out on a limb, you gotta double down to seal the deal, you know? Don't ever make a promise like that again. बहुत हार्ड होता है पता है चूज़ करना. मैंने यही मीको कभी नहीं कहा था. यही मीको यही मीको और गाइडेंस शोगन के मेरे को वॉल पेपर बनाने के लिए एक पिक्चर चाहिए थी एक दोनों की जो बेस्ट होती है डाउनलोड करता आम आदमी. मैंने 8-9 गाइडेंस शोगन और 5-6 यही मेको की फोटोज डाउनलोड करके रखा है और जिनको मैं कभी यूज़ भी नहीं करने वाला. बस ये है कि देखने में अच्छी है तो रखो. I'm sorry, Dia. I should have stayed put and listened. I should have trusted you. It's okay. I promised you I'd help find your grandpa, so I'll do whatever it takes. Whatever it takes? You just might be scholar material. Huh? Are you serious? The Eremites once said that I was a lunatic. Perhaps a little madness is essential to be successful in research. Why does it feel like he's using his praise for me as an excuse to brag about himself? Yeah. Okay, let's get moving. We should head back to the village and rest up. Today was just a trial run. Noon tomorrow is going to be the hard part. अभी तुम कौन सा मिशन करोगे वैसे मिकासा? हो गया क्या मिशन मेरा ये कंप्लीट हो गया आई गेस. हो गया ना भाई प्लीज़. मैं को ज्वाइन करवाऊँगा अब. हो गया ये क्वेस्ट कंप्लीट हो गया. मैं 1 मिनट वहाँ से आता हूँ अपने सरेन टी पोर्ट से. मेरे को कुछ कॉइन्स कनेक्ट करने. मैंने आज के कॉइन नहीं कनेक्ट किए. मैं सरेन टी पोर्ट मैक्स हो चुका है मैक्स और मुझे उसको अपग्रेड करना है. और अभी मैं मॉन्स्टर मारने के ओ भाई यार
अपग्रेड करना कितना वो होता है। Would you care to sit? अरे भाई तू चुप है भाई, तू अपना मुंह बंद रख। एक % डिस्काउंट तो देता नहीं तू। मेरे पास कोई नहीं है बिल्कुल भी। ट्रस्ट 720। मुझे इसको 8 करना है ताकि मैं अपना रैंक का वो सीनरी चेंज कर पाऊँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे क्या क्या चाहिए देखते हैं। पहले तो मैं ये बाय कर लेता हूँ। बिंग पॉइंट आ जाएंगे 6 फर्नीचर बिंग पॉइंट्स। वो गाइडर लाइसेंस वाला क्वेस्ट करना है। अच्छा हाँ, तो मैं गाइडर लाइसेंस भी तो नहीं अभी तुम्हारे पास। वो तो इजी है। और ये लेते हैं। ये भाई 8 हो जाए ना, मैं फिर अपना डेकोरेट करूँगा अपना टी पॉट। अभी तो मैंने इसको रश किया हुआ है पूरा, जैसे मर्जी तैसा बनाया हुआ है। या क्राफ्ट करना है। क्या क्राफ्ट कर सकते हैं अभी? इनमें से कुछ क्राफ्ट कर सकते क्या? क्राफ्ट ये हो गया। और ये भी क्राफ्ट कर दो। हो गया मेरा 8 11 का ये टी पॉट। इसको हटाने की जरूरत नहीं है, छोड़ो। फाइनली 8 हो गया। अब पता है मैं मैक्स है ये टी पॉट, मूड नहीं है उसका करने का। अब मैं अपने सीरीज अच्छा कौन सा चूज़ करूँ? मिकासा बताना। ये है माउंटेन, जिसमें माउंटेन होता है उसके पे ब्रिज होता है, तुम्हारा सीनरी होता है। जैसे ये है ना मेरा अभी मैं मेन ये है। इसमें क्या है, मेरा ये आइलैंड है, इसमें जो ब्रिज होगा ना आसपास जाने का वो ये ऐसे होता है। और ये है बीच, बीच के अंदर तुम्हारा ये होता है मक्कड़ का पुंग टाइप का कुछ होता है। मैं शो करता हूँ, एक सेकेंड। मैं एक ही चूज़ कर सकता हूँ, तो बताओ कौन सा अच्छा है। जैसे कि माउंटेन में वन तो मेरे पास है ही। 1 को तो मैंने रश किया हुआ है पूरा। ओ यार रास्ता कहाँ से है जाने का? ये है 1 तो मेरा रश है। जो नंबर 1 है ना, जैसे इसमें ये है नंबर 1 में तुम्हारे जैसे ये है ना माउंटेन वाले में, इसकी जगह पे मक्कड़ का ब्रिज होता है। और नंबर 3 बीच है। अब इनमें दिक्कत क्या है ना, नंबर 1 और 2 में दिक्कत ये है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ। मैं बेस 1 जैसे कि ये है, ठीक है, बेस 1 ये हो गया, बेस 2 ये हो गया और बेस 3 ये हो गया। तो ऐसे है मेरा। और बीच में क्या है ना, वो सारे एक जगह कंबाइन दिखते हैं। तो कौन सा रहेगा, 1 या 2? वो 1 तो है मेरे पास। 2 या 3 कौन सा बेस्ट रहेगा, माउंटेन या बीच? क्योंकि ये तो हमारा वो है ना नेविटेट आइलैंड है, ये एक तरीके से नेविटेट होता रहता है ये। तो अब माउंटेन बेस्ट रहेगा या बीच बेस्ट रहेगा? Would you care to sit down and join me for some tea? ये है माउंटेन जिनमें वाटरफॉल है, और ये बीच है जिसके पास सी है। कोई सजेस्ट करो इन दोनों में से। माउंटेन हमारे पास अभी ये है जिसमें कि ऐसे है चारों साइड से गोल्डन सा एरिया है, और ये हमारा बीच है। ये हमारा मेन आइलैंड है। फिर सेकंड अनमोक जो होता है ये है, और थर्ड वो। माउंटेन ज़्यादा सही रहेगा। माउंटेन से है माउंटेन अनमोक में। तो अब मैं इसको अनमोक कब कर सकता हूँ? लेवल 10 पे। ओ एक और अनमोक हो गया मेरा। बीच मेरे को पसंद नहीं है वैसे भी उतना। वैसे बीच सही है, बीच से ज़्यादा सही मुझे वो लगता है। पर ये मेरा जो फर्स्ट है, फर्स्ट को मैंने रश किया, उसको रिपेयर करना पड़ेगा। क्या दिखा रहा है इसमें? यूज़ इसमें ये मेंशन है, मैं मेंशन चेंज कर सकता हूँ अपना। वैसे
ये एरिया है मेरे पास एक, सेकंड एरिया है यहाँ पे, एंड थर्ड एरिया है यहाँ पे। ओह वाओ, ये सही है। 1 2 एक सेकंड ऑन फुट जाके देखते हैं। 1 ये है हमारा मेन माउंटेन के ऊपर, पर इसमें झरना नहीं दिखा, उसमें झरने दिखाता था। एक थर्ड एरिया, मैं मेन बेस तो थर्ड एरिया पे बनाऊंगा, फर्स्ट तो वेस्ट है क्योंकि और टब्बी है यहाँ पे। सेकंड एरिया ये है, वो कहाँ है झरना जहाँ पे होता है, वो है ना थर्ड एरिया पे झरना, वहीं बनाएंगे अपना बेस मेन। वो जो नहीं था जो अप एंड डाउन ग्राउंड था, 2 ग्राउंड एक साथ था जहाँ पे, वो थर्ड था ना शायद। यहाँ पे हम कुछ बना नहीं सकते, पर शायद नहीं, इस पे नहीं बना सकते, इस पे बना सकते शायद, बहुत बड़ी जगह है। या बना सकते क्या कुछ? फर्स्ट हमारा ये है 1 जहाँ से हम आए थे, सेकंड ये है, थर्ड ये है। ये कौन सी जगह है? फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, ये जगह पे जाना है हमें, इस पे फोर्थ जगह पे जाना है। इसमें हमारे पास एरिया का मैप छोटा है पर जगह ज़्यादा अच्छी है। जगह हमारे पास यहाँ पे वो है, मतलब कैसे कहेंगे इसको, मतलब लैंडस्केप थोड़ा बेटर है, जैसे कि हम यहाँ भी बना सकते हैं, उसके ऊपर भी बना सकते हैं। ये बनाऊंगा मैं यहाँ पे अपना घर। इसमें अब दिक्कत ये आ रही है कि मेरे को कौन सा वो यूज़ करनी चाहिए, मेन बेस। अपना फर्स्ट ये है, फर्स्ट को तो यूज़ नहीं करेंगे मेरे पास। फर्स्ट बिल्डिंग के लिए क्या है, मेन बिल्डिंग एक ये है, एक ये है, मेंशन है, और एक ये है। इसमें क्या है, दोनों में फ़र्क क्या है? इसका एंट्रेंस यहाँ से है, अच्छा इसमें डोर है, उसमें बड़ा सा वो है, ग्रीन वाले में मेंशन है, बड़ा सा गेट है इसके अंदर, इसमें सिंगल गेट है। सेकंड ये है, नहीं फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, थर्ड, मतलब मैं इस पर कुछ नहीं बना सकता। अपने सेंटर जो है ये, इन दोनों के बीच में जो माउंटेन, उस पर कुछ नहीं बना सकता, इस पर बना सकता हूँ। अभी तो इसे रहने देते हैं, बाद में बनाएंगे इसको। और हम इसे एग्जिट कैसे करेंगे पर? हाँ हमारा वो कहाँ है, मेन मेंशन कहाँ पे है? ये है मेन मैप, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो हम इस पे हैं, हम यहाँ से ये 2 हमारे पास आ जाते हैं, 2 एवं पे। इसमें सिर्फ एक इस पे जब बना सकते हैं, इस पे बना सकते हैं, और इस पे बना सकते हैं, इस पे नहीं बना सकते जो ये वाला है। तुम्हारा सरीन टी पॉट अनमोक था क्या तुमने जो अभी यूज़ करे थे? तभी भैया उठो। नहीं अभी तुम हमारा रैंक में चेंज कर दो, क्योंकि हमें इसमें कुछ पैसे नहीं मिलते हैं। इसमें हमें पैसे नहीं मिलेंगे ना, हमें करना पड़ेगा मैक्स, तब जाके होगा, सेट करना पड़ेगा पूरा। अरे कहाँ से होता है चेंज? अभी हम इसको यूज़ करते हैं वापस, क्योंकि इसमें हमें पैसे नहीं मिलेंगे, हमारे पास कुछ है नहीं। इसको मैं दिन में सेट करूँगा अपने हिसाब से एक बार, फिर आएंगे इस पर। अभी तो इसको करते हैं। मैं मैक्स है, मैं तभी मैक्स नहीं है, पर मेरा रैंक में मैक्स है। मैं 30 करेंसी मैक्स होता है ना, मैं 30 करेंसी तक ही नहीं सकता हूँ। अब तभी को 10 करना पड़ेगा आखिरी वाला भी अनलॉक करने के लिए। 15,000 ये मेरा मैक्स है। देखो एडेप्टा एनर्जी, If you ever have any... गुडू भाई, तभी भैया गुडू भाई। हम कहाँ थे? सुमेरु में थे ना? कहाँ थे हम? सुमेरु में डेजर्ट में थे कि कहाँ थे हम? डेजर्ट में कोई वो था जहाँ पे हम थे, विंग्स था। ये
यही तो बने थे शायद। बट स्टार्ट ही किए थे, ज़्यादा नहीं पता। तुम ना रेजिन्स खरीद सकते हो। मेरे को सबसे बेस्ट चीज़ जो होंगी है टी पोट का, मैंने बताना भूलूंगा तुम्हें उस टाइम। उसमें सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि तुम वहाँ से 3-4 चीज़ें जो तुम खरीद सकते हो, जैसे कि तुम रेजिन्स खरीद सकते हो। रेजिन्स का जो 60 रेजिन्स मिलते हैं ना, वो खरीद सकते हो। एक हफ्ते में एक ही खरीद सकते हो, टाइम लिमिटेड होता है। पर वो ये तुम वहाँ से ये भी खरीद सकते हो, ये फर्जाइंग रेजिन्स। और बाकी तुम वहाँ से खरीद सकते हो और भी चीज़ें जो तुम खरीद सकते हो, जैसे कि ये भी खरीद सकते हो तुम एक्सपी कार्ड, और ये ऐसे वाइट वाले जो एक्सपी कार्ड होता है वो भी खरीद सकते हो। और 3-4 चीज़ें और भी हैं अगर तुमने उनको मैक्स किया तो। वेट एंटिंग हमें जाना कहाँ है? तो टाइम क्या था? 6 से 8 के बीच में। मैंने तभी तो उसको जल्दी मैक्स किया है, ताकि मेरा तभी तो मैं उसे मैक्स करता ताकि मेरा ना एक बार वो हो जाए। भाई सॉरी आई कैन नॉट वॉच योर स्ट्रीम। अरे फैनी वाइन्स भाई, डोंट वरी, ये सब होता रहता है ज़िंदगी में। मज़े लेते हो बस, उस चीज़ तुम्हें करो जो कि तुम्हें पसंद है। हमें यहाँ ही तो जाना है, यहाँ पे बहुत मीटिंग हो गई है, बहुत तगड़ी मीटिंग। We're all here so early. Looks like we have everyone here. Isak, are you sure you want to come with us? I'll watch from a safe distance. Dia, I want to be there to bring Grandpa home. Okay, let's go then. Dia, wait. What's the matter? I heard that you were quite reckless yesterday. No more of that today, understood? Or I'll be very upset with you. सॉरी भाई, आई कैन नॉट वॉच योर स्ट्रीम। रीज़न आई डाउनलोड जेंशिन इम्पैक्ट। क्यों, क्या रीज़न था भैया तुम्हारा जेंशिन इम्पैक्ट डाउनलोड करने का? और आए हो तो लाइक करके जाओ जब आई गए हो तो। ओ भाई ये तो बहुत दूर है। कहाँ पे ये? यहाँ कैसे जाएंगे यार? कोई टेलीपोर्टर भी तो नहीं है पास में। कौन सा टेलीपोर्टर है ये? फैंस 8/58 GB भाई, ये तो है जेंशिन में। डाटा तो बहुत यूज़ होता है। पता, फूड रिसोर्सेज में ये बेस्ट है। ये 3 वो देते हैं मीट तुम्हें एक बार में। Time to go. भाई जेंशिन गेम भी तो है यार, और तुम पीसी में कर रहे हो। तुम कर भी तो पीसी में, ये भी तो सोचो। अच्छा वो हट जा रहा है फुट पॉइंट मेरा। ये है क्या? वो बुजुर्ग है, उनके पास कोई, इसका दादा मिल गया। They got here before us. Uh-oh. Is it because Paimon overslept by 5 minutes and held everyone up? Is everything ready? Absolutely. Although, you brought fewer people than I imagined. Bring him over. Grandpa! Why is there only one of them? Raman, I've always thought of you as a man of his word. What's this about? It's a 1-for-1 exchange. Sounds fair, don't you think? And let me put it this way. Agreeing to any kind of deal with the Dendro Archon's people is already a huge compromise on my part. Don't you think you've asked enough? You stay right there!
नया ग्राफिक कार्ड भी लेना पड़ेगा। ये तो है भाई, ग्राफिक कार्ड तो बाय करना ही पड़ेगा तुम्हें। अच्छा मैं नहीं फाइट करूँगा क्या? वो ये डेंडो आइकॉन, डेंडो टाइप बन गया मेरा टैब में। Why are your hands shaking? Wait a second! It's a earthquake! वो ये कर रहा है क्या ये? एक सेकंड, ये क्या है? वो इमर्ज हो गए सैंड में सारे सारे। भाई मत को, फिर इतना इन्वेस्ट मत करो, तुम्हारा मन नहीं है। हम अंडरग्राउंड कहीं पे है। नारुतो ड्रैगन बोन सुपर। अगर भाई तुम्हें स्टोरी वाइज देखना है तो नारुतो बेस्ट है, अगर तुम्हें फाइट वाइज देखना है तो ड्रैगन बोन सुपर बेस्ट है। मैं बता तुम्हें एग्जांपल दो सिंपल सा। अगर तुम्हें ना एक्शन देखना है विदाउट फाइट, एक्शन देखना है विद साइड मूवमेंट्स, तो तुम्हारी ना नारुतो बेस्ट है। अगर तुम्हें 1v1 या कॉम्बैट फाइट देखना है तो तुम्हें वन पीस और ड्रैगन बोन जी सेम ही है फिर तो, क्योंकि हैंड टू हैंड कॉम्बैट में भाई ड्रैगन बोन जी से कोई भी बीट नहीं कर सकता, इवन नारुतो वन पीस भी नहीं। अगर तुम्हें रेंज अटैक देखना है, जैसे कि फायर ब्लास्ट देखना है जिसमें तुम्हें रेंज में कुछ यूज़ करते हो, जैसे शरिकेन फेंका, टेलीपोर्ट हो गए, वाइट फैंग की फाइट देखनी, तुम्हें यंग ऑफ नाइट्स देखना है तो नारुतो बेस्ट है। दोनों अपनी अपनी जॉनरा वाइज बेस्ट है। हे आई गॉट 10 विशेस, तुम्हारे पास मेरे ख्याल से 10 विशेस है तो उसमें कर दो, 8 पुंग में करो, देखो क्या निकलता है। अभी करो, अभी देखते क्या निकलता है तुम्हारा। Grandpa? Grandpa? Oh no. He's getting confused again. Hey, look around you. Did there used to be a temple here? It seems that when the sand dune collapsed, it exposed these underground structures. The symbols on the gate belong to King Deshret's civilization. This structure must be ancient. Over time, the sandstorms completely buried it and left it in the state we see now. It could have been an underground palace in the distant past. Miracle. अब इससे बेस्ट क्या चाहिए तुम्हें? निंगवान निकलना है भाई। मेरा निंगवान नहीं निकलना मेरा रास्ते। बेस्ट है मेरे से, मैं बताऊँ ना, निंगवान को तुम बिंड को रेंज अटैक में बेस्ट है वो भी। तुम्हारे जितने भी हैं except for him, he got off lightly. निंगवान को बिंड को और लियोंग को भी बिंड को। What is your earning in YouTube? Our exalted Lord has shown us the way to his sacred मैं palace. भाई इतना है ना, मैं तुम्हें स्पीक करके नहीं बता सकता, मैं तुम्हें टेक्स्ट करके बताता हूँ। As it happens, I want to take a look inside too. What are you doing? Don't you think it's curious? One minute, Lesser Lord Kusanali's power protects us from harm, and the next, remnants of King Deshret's civilization appear. Two major deities are vying to showcase their power to us. It would be a shame not to witness them both. Paimon thought you weren't interested in gods. Yeah, but... Indeed. In my view, gods are just a higher form of living being. Or creature, you could say. Yeah, new discoveries are always worth investigating. Whether they have anything to do with gods is neither here nor there. Raman, what are you gonna do about your men? I'll just let them lay here. King Deshret will take care of his people. Right now, I'm going inside. रहमान भाई तुम बहुत गंदे हो, तुम अपने क्या करना है यहाँ पे? Time to go.
Follow the wheat. अच्छा इसे सिर्फ वही देखना। आगे तो वो है इंगक्टो टाइप, मुझे कंफर्म चाहिए इसके अंदर। बार उधर गया, एक सेकंड मुझे वापस बाहर निकलने दो। फायर, आइस एंड इंगक्टो, ये तीनों तो मुझे चाहिए। मैं बस कोई ऑप्शन नहीं, मुझे बार को हटाना पड़ेगा। कुकी शिनोबू यूज़ करना पड़ेगा इसकी जगह। What they do this time? बहुत कुछ किया उन्होंने। सेम यही तो है यार, मुझे पता है। It's full of life here. This defies comprehension. It looked completely desolate from the outside. Yet, it flows with energy inside. Yeah, and there's so many plants. It's so pretty. Sir Rahman. Huh? Me? मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि निंगवान आएगी मेरे पास। अरे निंगवान आएगी, मैंने बताया तो था। जो तुम्हारे 20% डिस्काउंट वाले होते हैं ना, उनमें तुम्हारे बेस्ट कैरेक्टर निकलते हैं। मेरे भी फर्स्ट बेस्ट कैरेक्टर उसी से निकले। ये लगे अब मेरे वो यूजनेस हो चुके हैं, बट स्टार्टिंग में वो मेरे लिए बेस्ट थे। मैं शो करता हूँ अभी कौन से मेरे, मैं तो उसमें हूँ अभी। There's nothing to be angry about. Think of this as an academic journey. It does seem kind of strange. If that's true, then we might have to explore this whole area to find an explanation. मेरे फर्स्ट कैरेक्टर जो निकले थे, देखो न्यूंग तो कंफर्म है निकलना। न्यूंग तो कंफर्म है निकलना। तो ऐसे ही बहुत सारे कैरेक्टर्स थे जो कि उस टाइम के हिसाब से बेस्ट थे। तो कहते हो ये क्या करूँ मैं? ये करना है क्या? Genshin Impact fight like dimension move like a hong as Morgan listening King Dashrat. ये बचा है ये। अच्छा मैं रोटेट करती, वो सारे रोटेट होते क्या? अच्छा ये 3 फेसेस है ना, ओके। और ये आखिरी फेस इधर है, तो मैं अगर इसको कहूँ आखिरी वाले को एक बार रोटेट, 1 2 एंड 3 4 नहीं 5, ये तो हो गया आखिरी। तो मैं रोटेट कर सकता हूँ ना इसे, हो गया भाई। जेंशिन इम्पैक्ट फाइट नेक्स्ट डिमेंशन है, ये वाली बात तुमने बहुत सही कहा है। इनएविटेट होगा क्या? एक्टिवेट इनएविटर नहीं, नीचे जाएगा। बट मेरे हिसाब से ना भाई जेंशिन और डिमेंशन में सिर्फ एक ही चीज़ का फ़र्क आता है, वो है ग्राफिक्स का। इन्वेस्टिगेट गाजर मूंग है या तो सांग, तुम कहीं भी पीछा छोड़ देखो। ओ भाई टफ है भाई, मगर नहीं है। रुको मेरे को बाकी चीज़ इन्वेस्टिगेट करनी है, तुम यहीं बैठे हो भाई। मेरे को यहाँ इनको मारने पड़ेगा एंड में। The wind knows me. Clouds high, the birds call. Judgment! Shiver!
वन पीस लाइव एक्शन ट्रेलर वॉच किया भाई। वन पीस लाइव एक्शन ट्रेलर मैंने वॉच तो किया बट मुझे उतना, ओह भाई मैं दब जाता इसके बीच में, क्या कर दिया इसने मुझे ना, उतना वो नहीं हुआ भाई। देखो एनिमे देखने वालों को ना लाइव एक्शन में उतना इंटरेस्ट नहीं लेना चाहिए क्योंकि तुम डिसअपॉइंट हो सकते हो एट द एंड। तो मैं इसमें ज़्यादा उतना इंटरेस्ट नहीं है हो। हाँ आएगी देखेंगे, उसके बाद जज करेंगे कैसा है। अभी से जज नहीं करना चाहता मैं, क्योंकि बाद में जाके दिक्कत आ जाए। कुछ है तो नहीं है ना पीछे, नहीं बाद में जाके कोई दिक्कत आएगी ना तो बहुत बुरा लगता है कि तुम इतनी उम्मीदें बिठा रखे थे जिस चीज़ से, वो बेकार हो गया। Into the wind. एक मिनट कुकी, तुझे अपनी पावर भी बढ़ानी है मार। ओए क्या कर रही है बेवकूफ, देखो सबसे 4 स्टार वेपन दिया मैंने तो क्या मारे क्यों नहीं उसको। डू यू वॉच वन पीस भाई? एक सेकंड, तुमने यही पूछा ना, एक सेकंड। हु पीपल डू नॉट वॉच वन पीस? मैं तो देखता हूँ भाई। मैं है क्या ये एक्टिवेट? अरे यार शिट, मुझे ऊपर जाना था साथ में। काजुआ लेते हैं। ए भाई ऊपर ये कैसे जाएंगे इसके? नो किस पे से? वो नीचे भी तो नहीं आता है। अच्छा ये नीचे आके ऊपर जाएगा क्या वापस? वो नीचे बैठ जाए भाई। अरे भाई इस पे चढ़ेंगे कैसे? यहाँ कुछ और भी तो नहीं है एक्सप्लोर करने के लिए। कम बैक। व्हाट लैंग्वेज डू यू विश वॉच नारुतो? भाई नारुतो मैंने जापानीज में देखा है। अरे यार कैसे जाएंगे इस पे भाई? कोई तरीका तो नहीं दिखा मुझे। ये मार इसे तोड़ सकते क्या? नारुतो मैंने भाई जापानीज में देखा था। वो यहाँ पे वो है चेस्ट। विकासा क्या हुआ? माइक कर दो यार। मैं इसके ऊपर कैसे जाऊँगा? किसको पता है क्या यार? क्या ही है ये? आजा भाई। नीचे बड़े आराम से आता है ये। ओह मैं यहाँ से भी एक्टिवेट कर सकता हूँ। अच्छा मैं अब नीचे नहीं घुस सकता ना यहाँ से? नहीं। यू आर अ जापानीज मैन। नहीं ऐसा नहीं है, मैं जापानीज मैं देखता हूँ, मज़ा आता है थोड़ा बहुत। ये कुछ है यहाँ पे। Fallen leaves, adorn my night! I'll settle this. This way. Just you wait. One with nature. मतलब कुकी अपनी एचपी खुद ही कम कर देती है, ये चीज़ बेकार होता है इसका। You can't run. सुपर कंडक्ट मार देंगे भाई। एक मिनट में को ये बताओ ये क्या है? After 6 days of infiltrating the temple, I finally understand. ध्यान दो भाई, अब पढ़ना ही नहीं है, स्किप हो गया। वन पीस इज रियल और फेक? भाई वन पीस और रियल और फेक देखो भाई। स्पॉइलर दे दूँ क्या तुम्हें? अगर तुम्हें चाहिए तो मैं दे सकता हूँ स्पॉइलर। मैंने मांगा नहीं पड़ा है बट मैंने इतना तो मुझे पता है कि वन पीस क्या है। तो अगर तुम्हें स्पॉइलर चाहिए तो मैं दे सकता हूँ। अबे एक्टिवेट। वापस नीचे जाना है? नो 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 नहीं, फिर नहीं चाहिए तो भाई फिर बात है क्या? वैसे तुम्हें स्पॉइलर नहीं चाहिए तो मैं बता सकता हूँ वन पीस है क्या। ऊपर जाना है हमें।
इससे क्या होगा? ऊपर कैसे जाएंगे हम? एक मिनट, वहाँ पे कुछ था ना? भाई आई डू नॉट वॉच वन पीस तुमने वॉच नहीं करते भाई, तो फिर स्पॉइलर से क्या डर है? आफ्टर 6 days infiltrating the temple, I finally understand that pirates paranoid tricks. The elevator wing this distance the ground get on the top. If it before it starts escalate again to reach the dome. Okay. None of like for every ground mountain shall not pass over whatever the break the paradise to orders. वन पीस है टीइंग। अरे मुझे पता है रियंग। अच्छा वन पीस इज रियंग। ओके मिकासा। अरे मुझे समझ नहीं आया ये क्या सिस्टम है। इसके ऊपर कैसे जाएंगे? पहले तो नीचे से ऊपर चढ़ने में दिक्कत आ रही थी, ऊपर से ऊपर जाने में दिक्कत आ रही है। एक सेकंड, इसको ना वापस नीचे भेज देते हैं। ओह अच्छा ये दिक्कत है इसमें। एक एलिवेटर नीचे अरे यार हम इस पर क्लाइम नहीं कर सकते ना? नहीं, एक एलिवेटर नीचे पहुंचा ही नहीं था कि हमने उसको दूसरा एलिवेटर यूज़ कर लिया। बट अब दिक्कत ये है कि हम इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे यार? ऐसे पूरा एक वो है ना टेंग में ये वन पीस रियंग और फेक। वन पीस इज रियंग। देखो मैं तुम्हें बताता हूँ पूरी तरीके से रियंग नहीं है। तुम्हारी देखो तुम्हारी बातें बताता हूँ मैं। अगर तुम पूरी तरीके से उसे सोचो रियंग है तो वो नहीं है। अच्छा ऐसे जाएंगे हम। वन पीस हाफ रियंग है। अब तुम्हें ये हाफ रियंग क्या होता है ये समझाऊंगा तो थोड़ा टफ सिचुएशन हो जाएगी। हाफ रियंग मतलब ये है कि वन पीस कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। जैसे हम सोचते हैं सोना सोचता है ना वो मूवी, सोना नहीं है वो। वन पीस जो वो उसकी जो टीम बिल्ड कर रहा है ना मूवी, वो है वन पीस। उसके फ्रेंड्स उनके साथ उसने जो जर्नी की है, वो जो टाइम स्पेंड किया है, वो है वन पीस। वो भाई कितनी जल्दी मर गई है। रोजर ने भी अपने जर्नी में जो टीममेट उसे मिले हैं वही वन पीस है। बाकी वन पीस कोई रियंग ऑब्जेक्ट नहीं है जिससे तुम अपने साथ ट्रैवल कर सकते हो, मतलब उसे शो केस कर सकते हो। वन पीस का मीनिंग है जो तुम्हारे फ्रेंड से जो जर्नी तुमने की है, जो मेमोरीज तुमने गेन की है, वो है वन पीस। अब कहाँ जाना है? अच्छा ये एक्टिवेट हो भाई। अच्छा ये बचा एक, ये तो ऑन हो गया वापस। टर्न ऑफ, टर्न ऑफ। यही मेन स्टोरी है। अगर तुम देखना चाहोगे तो वन पीस का जो मेन स्टोरी है वो यही है कि जो तुमने टाइम स्पेंड किया अपने टीममेट्स के साथ, वही वन पीस का मेन गोल है। मेन जो तुम्हारे फ्रेंड्स है वो है तुम्हारे वन पीस, तुम्हारा मेन। और अगर देखा जाए जोरो से, अगर जोरो और
मूफी और सांजी, इनकी बाउंटी जो है, इनके टीममेट चाहते तो उनको कब का मरीन को देके उनकी बाउंटी ले सकते हैं, बट उन्होंने बाउंटी नहीं है ना, क्योंकि दे केयर फॉर ईच अदर। वरना वन पीस ना भी मिले तो इनकी बाउंटी देखा जाए, मूफी को आराम से मरीन को देखे ना, वो आराम से इतनी बाउंटी आ जाएगी उनके पास। और उन्हें पता है कि मूफी मरीन वो जो मनी है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यही वो शो को इस करना चाहते हैं कि वन पीस जो है वो किसी मनी को नहीं शोकेस करे, वो उनके बिटवीन जो फ्रेंडशिप है उसको शोकेस करे। जो तुम्हारी फ्रेंडशिप है वो मेन तुम्हारा वो है ट्रेजर। जो यंग फ्रेंड्स तुमने अपना क्रू, जो अपना ड्रीम क्रू जो तुमने बनाया है, तो भाई जिंदा कैसा है ये, क्या करना है यहाँ पे? एक तो तुम इस पे नहीं चढ़ सकते टेम्पंग में कहीं पे भी, तुम्हारा वन पीस वही है। और आखिरी जो आइलैंड जिन्हें तुम्हें जाना है, जिसका तो नाफ टेंग जो नाम रखा है उसने, गोंगडी ओजे ने, वो है भाई आई एम लेजेंड, आई वॉच वन पीस वॉच इन हिंदी। मैंने वो हिंदी में वन पीस, हिंदी में वन पीस भी क्या? इंग्लिश में देखा मैंने वन पीस। तुमने हिंदी में कहा देख लिया? मैंने इंग्लिश में वन पीस देखा है थोड़ा बहुत, अगर तुम कहो तो। वैसे जापानीज़ में देखा है, हिंदी में कहा है। अबे कहाँ से एक्टिवेट हो गई? एक सेकंड, Time to go. अरे इसे एक्टिवेट कैसे करेंगे यार, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा, ये फायर से एक्टिवेट हो गई क्या ये? मतलब वो लाइटनिंग से? अरे यार समझ नहीं आ क्या है। ओके, ये देखियो, किसी भी फायर ऑब्जेक्ट के पास से मैं मूव करता हूँ तो वो वहाँ मूव होगा है। भाई सैड वन पीस हिंदी में, शायद अब हिंदी में आ जाए तो वन पीस, मे बी फ्यूचर में कभी। अभी तो कोई प्लान नहीं। नारुतो आ गया वही बड़ी बात है भाई। वन पीस तो अभी भी कंटिन्यू है, तो वो अभी उसके चांसेस बहुत कम है भाई। यहाँ करना क्या है? अरे क्या करना है यहाँ पे भाई? एक सेकंड, मेरे को आखिरी ये मूव नहीं होगा बस। एक तो सामने नीचे गिर जाए, यहाँ से चढ़ नहीं सकते तुम। ये आखिरी वांगे में कौन सा क्या करना है? ये एक्टिवेट करना है क्या? ओके, हैं? टर्न ऑन। अब वो दोनों एक्टिवेट है। क्या है? अरे तुम में से किसी को समझ आ रहा है क्या ये? क्या भाई? आई वेट करना भाई, कोई बात नहीं है। यहाँ से मूव होंगे क्या वो? यहाँ मूव होने पे? अच्छा यहाँ पे भी है, चलो ठीक है। इसके पास जाने से सेंटर का तो मूव होगा है, चलो समझ आया मुझे। इस पे ना बिंगविश कुछ लाइट है अपने राइट साइड वहाँ पे,
बाकियों पे नहीं है। यही गेट हैं और ये वो ट्रिगर्स हैं। आज तुम चढ़ भी तो नहीं सकते, जाना भी तो तुम्हें इधर से है। ये कहाँ से ट्रिगर है आखिरी? ये हो गया न्यू। तू भी घूम जा भाई। कुकी की पाव से घूमेगा क्या ये? ना भाई घूम ना भाई, समझ नहीं आ क्यों नहीं घूम रही ये। सेंटर वहाँ घूम रहा है, बाकी कोई भी नहीं घूम रहा है। एक्टिवेट, ये दो एक्टिवेट हो गए, ठीक है। बंद मत हो, ये बंद भी हो गए। क्या है ये, किसी को पता है क्या यहाँ पे करना क्या है? तो मैं ये गेट अनलॉक करना है उनकी मदद से। ये दो ट्रिगर्स हैं, एक मिनट चेक करते हैं हम जहाँ पे हैं वहाँ पे क्या करना है। एज एग्रीड यू गो टू प्लेस डिज़ाइन बाय रहमान टू एक्सचेंज होस्टेज। ये तो वही क्वेस्ट है जो हम कर रहे थे, वो नहीं। इसको अनलॉक कैसे करेंगे? ये इस बारे में कोई भी डिटेल नहीं दिया। हम इस पर क्लाइम कर सकते क्या? नहीं। ओके विथ ओ हो गया भाई। इससे क्या हुआ? ये अनलॉक हो गया क्या? हैं? ऐसे हुआ क्या है? अभी हम इसको एक्टिवेट कर पाएंगे वापस। और भी नीचे जा पाए क्या हम? वहाँ कुछ डीप जा पाए। ओके। That's a sight to see. King Deshret's splendor surrounds us. There's so much vegetation here. It's different than what I expected. Sure are a lot of plants for a desert. That's what I call divine providence of King Deshret. भाई कितना मैजिकल बनाया है सब कुछ इसमें। This scenery is wonderful. ओके तो हम बाहर आ चुके क्या? ओह यहाँ पे तो एक पेड़ है। It's getting brighter. Oh, it looks so beautiful. वैसे मैं यहाँ से शॉर्टकट नहीं ले सकता, बट मैं रिस्पेक्ट करना चाहता हूँ इनके मेडिंग्स को, जिसने भी। ओह मैं सोचा गेम अटक गई, मुझे गेम अटक गई। भाई गेम अटकी नहीं है। Wait. What's that? A load of flowers. And it looks like there's something among them. These are King Deshret runes. They left something behind. Yes. It's an elegy written in an ancient script. What does it say?
Here lies our faithful priest Kasala. His wisdom is a miracle among the people, deserving of high praise and admiration. You can read ancient King Deshret script? Of course. Every student needs to master at least 20 languages before they graduate. He's not serious, right? There's still something off about this place. The elemental energy here is too concentrated. The scent of life. Is it वो trying to Genshin tell us Impact something? एक्टर आए कि योगिची डीमन स्लेयर योगिची की तरह है कौन सा है हुस अच्छा हुस मेरे को तो नहीं कोई दिखा जो योगिची से कंपेयर कर सके कोई ऐसा इतना बेटर नहीं दिखा मुझे तो एक्टर मानते जेंशिन फेवरेट गेम में से एक है बट योगिची है भाई Is this it? Analyzing. There seems to be a hidden message among these skeletal remains. Excellent. There's a device from King Deshret's civilization in this gravesite. I'll transmit the information over and project it for everyone to see. Isn't sharing knowledge against the Academia's rules? Yes. However, under the circumstances, I'd prefer you to see this for yourself. You'll understand after watching. के जैसा भी नहीं है जेनिटस जैसा भी कोई नहीं है तांजियो जैसा भी कोई नहीं है यार बिंग डिफरेंट है भाई वो उन्होंने को बनाया ऐसा गया है कि Civilization is Enjoy. born of knowledge, but so too can knowledge be its demise. A disaster caught us unaware. It was knowledge that did not belong to this world. King Deshret brought this forbidden knowledge into our world, and it quickly spread like a plague. People's minds were filled with crazed whispers. Dark gray scales spread across their bodies. Even the land was stripped of its vigor. Only a desperate, deathly silence remained. Were it not for greater Lord Rukkhadevata from the forests, the damage would have been irreversible. She summoned the priests to build temples and infused into them the divine power of life. The disaster was miraculously tempered, and the embers of our civilization were preserved in Aru village. Alas, the miracle could not last. As long as forbidden knowledge continued to exist, it would forever blight this world. In the end, the proud king of the desert, my eternal lord, chose to sacrifice himself. I have spent my whole life since guarding one of these many temples. But now, my duty is coming to an end. As I close my eyes for the final time, the sight of that noble deity will appear in my vision once more. In helping King Deshret to eradicate forbidden knowledge, she exhausted her strength, and her form became that of a small child. How strange. Now that I think of her, I no longer have any fear of death, for I sense that the spirit of life will abide with me during my eternal sleep. Children of the desert, cling no longer to past grievances, but hold tight to the memory of this act of benevolence. What was that? The priest's memories. No, impossible. Greater Lord Rukkhadevata. So the former Dendro Archon and King Deshret were never enemies at all. But this doesn't make any sense. The Dendro Archon's followers,
They're clearly... Was that the former Dendro Archon? She became so tiny in the end. You might be distrustful of the Akasha, but there's no reason for you to doubt King Deshret's technology. You've just witnessed his priest's last words. I've never heard about any of this before. The surviving followers of King Deshret all gathered in Aru village. Our god did not make mistakes. We refuse to believe any of the rumors. King Deshret's death, the all but total annihilation of our civilization, it was all Greater Lord Rukkhadevata's doing. We saw her as nothing more than a traitor, who stabbed us in the back in our moment of crisis. Just like us humans, fighting, feuding, double-crossing each other to survive in the desert. You were blinded by your prejudice. If I hadn't... How could I ever begin to accept this? The truth is so far from what I've always known. Am I really supposed to believe that after all these years, all this time seeking revenge, suddenly now my enemy is my savior? Rahman, that's enough. Give it a rest. You're starting to make a fool of yourself. Dia, tell me, my Eremites and I, what are we even fighting for? Hey, how you doing? I'll live. I should probably go. Can't just stay here forever. What's your next move gonna be? Oh, I know what you're going to ask. I feel deeply ashamed of everything I've done. But please, give me some time. After everything that's happened here today, somehow I need to explain it to the others. It's not gonna be easy. Well, I guess that's for me to deal with. Dia, this is where our camp's located. Make a note of it. When would be a good time for us to go? Tomorrow, I'll convince everyone that we're all on the same side. And I'll return every last one of your your village keepers. We'll share our other resources with you too. You seem to finally understand that our true enemy is the sages. Yes. The gods never gave up on anyone. It's the people responsible for all this that need to face the consequences of their actions. That must have been rough, but he seems to have figured things out now. Rahman's no fool. Being the leader of your own faction in the desert is no easy feat. It's too bad he was held back by his belief in King Deshret. But now that that's changed, I guess we have a few more people on our side. The outcome, at least, is favorable. We should get going too. Let's head back, have a proper meal, and a nice, long sleep. We'll need all our energy tomorrow. Sino, we're leaving! Stop yelling.
Lightning Strider! Raman, we're here. Everything's been arranged. Someone will bring the village keepers back to Aru village shortly. I guess all I can say now is, thanks for agreeing to help. Don't mention it. I think we can both agree you went to hell and back for it. But we share a common cause now. From here on out, we're allies. Where are the perpetrators? I'll bring you to them. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scribe! There's no need to yell. No one can help you now. We've been all over the desert trying to find you! That's right. General Mahamatra? No, no! Make it quick, please! Swift and painless! Whoa. The moment they set eyes on Sino, they turned pale like they've seen a ghost! You should have known that I would be coming for you. Wait, we were just following orders! You know what I'm talking about, right? There's no way we could have done all this by ourselves! No, not Sino! He's gonna tear us limb from limb! I could do worse. Please have mercy! Start talking. Otherwise, I'll have to resort to other methods. So, your superiors have kept you quite busy recently. Why? What are they trying to accomplish? They wanted to extract canned knowledge. Don't play dumb. They extract divine canned knowledge. Then what? I really don't know how to explain it. Well, you better start talking or you'll be sorry! You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Huh? Uh-huh? That sure didn't sound like a fancy metaphor or anything. How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing project. They are creating a new god. A god that will belong to them and to the people of Sumeru. It may seem as if Sumeru's academics are thriving, but ever since the death of Greater Lord Rukkhadevata, scholarly breakthroughs have been few and far between. The withering of Irminsul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like, if only Greater Lord Rukkhadevata was still with us. Continue. And then, someone from the Fatui showed up. They called him the Doctor. He brought a gnosis and said he wanted to borrow the Academia's research facilities. The Doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he said those words, he asked them, do you wish to create a god? This is what the arrogant ignorance at the extreme end of academia looks like. First, the Academia spent a long time constructing a divine vessel, which was based on an exquisite humanoid puppet. After that, they harvested dreams via the Zeb-Zerus Festival Samsara, maximizing the Akasha's output. With the Doctor's help, and the Akasha now functioning at maximum efficiency, they were able to use it to extract the power from the Gnosis and convert it into a divine core. Next, they decided that their new god needed to possess divine wisdom. For that to happen, they needed a huge quantity of divine canned knowledge. It adds up. But how do you determine whether the knowledge extracted is of divine origin? Call it an educated guess? The Academia has been trying to figure out the exact source of the Scholar's madness for centuries, but to no avail. Nobody can explain the cause of this phenomenon. Surely you can see what that implies, Scribe Alhaitham. If it's knowledge no mortal can comprehend, then it must be something only gods are able to decipher. In other words, it's the source of the God of Wisdom's omniscience and omnipotence.
You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It's the ability to exercise control over knowledge and wisdom that matters. It is as if they are cursed with a desire for omniscience and omnipotence that burns in their blood. Some organisms demonstrate phototaxis, and thus orient their entire lives in respect to sources of light. For the sages, their only source of hope is the existence of a deity who embodies the acme of wisdom. भाई नाइट बोट बैन कर देगा This is but a मत form करो of भाई phototaxis. फाइनिंग मत For many scholars, the absence of a god of wisdom means stumbling in the darkness for the duration of their life. Then what does Lesser Lord... Is she not a true god present in this world? If you already have a new god, why try to create another one? From the beginning, the Academia has never treated her as a god. When the Academia first discovered Lesser Lord Kusanali, the newborn god of wisdom, the sages hoped that she would be as wise as Greater Lord Rukkhadevata. But upon evaluation, they found that at the time she possessed no more intelligence than any ordinary human child. The sages never had a ruder awakening. This forced them to accept that Greater Lord Rukkhadevata had indeed passed away. Not to mention that Lesser Lord Kusanali's gnosis had been used to power the Akasha this entire time. By herself, she has neither an Archon's raw power, nor the spectacular insight अरे हो जाएगा टेंशन मत लो Raman, we're here. Everything's been arranged. I guess all of God, no mentions. पहले ये कहते I जितना think हो we गया can उसको both हटा agree देते you skip करना went to पड़ेगा hell and back for it. But where are the I'll bring you to them. So these are the people who kidnapped the village keepers. Oh no, it's the scroll! There's no need to... We've been up! That's right. General Mahamatra? No, no. Whoa. The moment... You should have known. Wait, we were... No, not so... I could. Please have... Start talking. So, your superior... they... Don't play. They extract divine... Well, you better step... You don't want to make things any more difficult for yourself, do ya? Be my guest. Uh-huh. How did you know? There's no use hiding it now. Yes, you're right. The Academia is working on an important and potentially world-changing... It may seem the withering of Ermin's soul has been getting worse recently. The sages have tried everything they could think of, but nothing's worked. I'm always hearing them say things like... Continue. And then, the doctor was previously expelled from the Academia. At first, the sages looked down at him in disdain. But when he asked them... This is what the... First, the Academia. After that, with the doctor's help, and the... Next... It adds up. But how do you determine whether the knowledge... Call it an educated guess? Nobody can explain the cause of this phenomenon. Sure, if it's knowledge, no... You must have noticed by now. The Academia doesn't care about who their god is. It is as if they are cursed with some organism. This is... Then what does Is she not a... From the beginning, when the Academia, they found that at the... Not to mention, that slowly but surely, people began to forget about her. So... All right, let's try to keep our cool. If अच्छा everyone's in a तुमने यहाँ bad पे छोड़ा mood, था then last let's time change up our जब scenery. स्ट्रीम में बफर आया था Raman, give me a few men to help us escort the village keepers back. Sure, as you wish. तो बाकी स्ट्रीम कंटिन्यू करते हैं बाय बाय गुड नाइट बाय 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 बाय